Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और यस, ये है ट्रांसफर वीकली शो बिकॉज यस, मैं जानता हूँ काफी लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे बेसिकली फॉर आवर वॉच अलॉन्ग्स. हाँ, हमने बहुत सारे वॉच अलॉन्ग्स किए इस वीक में और वी डिड obviously for the UEFA Nations League as well as Finalissima. So lot of football जो हुई थी, लेकिन उस दौरान हमने काफी ट्रांसफर डिस्कस किए थे एंड आई नो कुछ लोग थे in certain watch alongs, कुछ लोग नहीं थे. So I thought let me have a weekly show जहां पर we'll not only recap as to what has happened but also add on to जो हुआ है starting of this weekend, क्या होने वाला है, what we're anticipating and how do you rank those transfers or what do you think होने वाले आपके क्लब्स के लिए. लेकिन हाँ, before anything, let's like the stream as always. Just the press of a button, जैसे मैं बोलता हूँ. Let's like the stream and do share अगर possible हो on social media. It certainly helps a lot. Okay, my buddy is in the house. What's up? All good. Suryansh in the house as well. Hello to Suryansh. क्या हाल है भाई? मतलब all I'm pretty sure अभी भी champions of Europe will be kind of enjoying it, but at the end of the day it's transfer window and that's something that we are interested in, apart from football जो होने वाला है international football. Robin Singh in the house. Hello भाई. मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? Big up to Talk MU as well, and reminds me that again, do subscribe to our other channel as well, Almighty Sports Plus. And not just that, I've tagged another channel which basically Talk MU owns. Do consider subscribing because yes, it's a fight for cancer via football. That is brother Talk MU is doing it. So I have tagged both the channels, that is apart from Almighty Blues FC, in the description of our very first line. So जाकर subscribe करिए, just takes a minute. It helps a lot. Maguire starts for England. हम बात करेंगे towards the end of the stream of that. Don't worry about that. And by the way, we are live for the watch along for Italy, Germany as well आज रात को. लेकिन हाँ, अभी ट्रांसफर्स की बात कर लेते थोड़ा ज़्यादा. KDB is quite unlucky, I suppose, be with Belgium or with City. Fair enough. भैया फ्रांस करता हूँ support. Interesting. Championship of Europe is Real Madrid now. Good evening, sir. Nipun, nice to see you. बहुत दिन हो गए निपुन को देखे हुए. Well, great to see Nipun. Lukaku and Mane, आस्तीन के सांप. बात करेंगे absolutely. Yes, Sue in the house as always, and मैं भी बढ़िया हूँ. Even though I've already told you this, okay. Really happy for getting the channel back. अरे यार, it means a lot. And not just this, we are on the other channel as well. Like I'm saying, England watch along नहीं करेंगे. We'll try and comment on the lineups and the tactics towards the end of the stream. लेकिन we'll do the watch along for Italy, Germany. ठीक है? And Lumanu in the house. Thank you, bang as well. चलो बात कर लेते हैं. तो शुरू करते हैं ट्रांसफर्स का. आई एम होपिंग एवरीवन हियर 25 ऑफ यू वाचिंग, सब लोग ने लाइक ठोक दिया और बाकी लोग की बुला हो सके तो. लेकिन हाँ, ऑब्वियसली ऑलमाइटी ब्लूज एफसी है. आई विल कम टू डेफिनेटली ईच एंड एवरी क्लब. मैं चाहूंगा कि यार जितने टॉप क्लब्स को कवर कर सकूं ना उतना करूंगा इस स्ट्रीम में. ठीक है, क्योंकि वीकली सीरीज है. आप अपने कमेंट्स भी डालिए विच इज मोर लाइकली ट्रांसफर, विच इज नॉट. ऑब्वियसली हमारे रेटिंग्स है ऑलमाइटी, माइटी, सो वीक एंड वेरी वीक. ठीक है, तो हेलो टू तन्मय भी बोलते हो. तन्मय से याद है चेल्सी से शुरू करते हैं बिकॉज हाँ, देयर इज अ लॉट टू बी टोल्ड व्हेन इट कम्स टू चेल्सी फुटबॉल क्लब. ग्रेट न्यूज ओवर द पास्ट वीक. क्या हुआ है? ऑब्वियसली बिगिनिंग ऑफ द वीक हमने शेयर किया था द बिग न्यूज दैट टॉड बर्ली इज ऑफिशियल. दैट इज द मेन इन टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर मार्केट. मैं तो बोलता हूँ और वो ऑफिशियल हो गया टॉड बर्ली का कंसोर्टियम. लेकिन होते ही क्या आया था? वी हर्ड अबाउट हकीमी का इंटरेस्ट वापस. सो दैट टेल्स मी कि टुकल इज वांटिंग टू प्ले मोर द अटैकिंग विंग बैक सिस्टम अभी भी, एंड व्हिच इज नॉट बैड. मतलब दैट हैज डन वेल फॉर चेल्सी इन द पास्ट, प्रोवाइडेड हमारे सेंटर बैक्स प्रॉपर मिल जाए, जो प्रॉब्लम है. लेकिन हकीमी इज इट रियल? मैंने रेट किया था वीक बिकॉज यार एक साल पहले मूव हुआ है पीएसजी एंड probably his wife wanted to be in Paris, so that's quite obvious that he will not move to England so soon. लेकिन क्या है वो न्यूज क्या है? because there is a division in the camp apparently in PSG that South American players versus the rest of the players, थोड़ा division हो गया है. तो इसलिए हकीमी kind of is taking the South American side, which also includes Neymar. So that is a possibility. Maybe not now, maybe in future, maybe January or next summer में possible है, is what I'm saying, but not possible now. नेमार की बात करें तो यार अगेन बिग रिपोर्ट सेइंग दैट यार वो छोड़ने वाले पीएसजी. ओके, दैट देयर आर रिपोर्ट्स. लेकिन अगेन मेरे ख्याल से इट ऑल कम्स डाउन टू द न्यू मैनेजर. डोंट यू थिंक सो? देयर आर आल्सो रिपोर्ट्स, पीएसजी की बात कर लेते क्विकली, दैट हाँ फाइनली एम्बापे और स्लैश पीएसजी दे विल बी रिप्लेसिंग आर मिस्टर पोचेटिनो. हाँ, पोचेटिनो विल बी सैक्ड. Not only that, Leonardo is going out for sure. Fabrizio Romano ने भी बोल दिया है
and Campos is coming in. So that is going to be really interesting that, how does basically, as in Campos done versus Leonardo. Luis Campos is the person हम बात कर रहे हैं, काफी popular है choice, and Leonardo, as much as a great player थे, he is going out. So it depends कि कौन manager आने वाले हैं. Like I know I've gone through a lot of comments from PSG fans. सब लोग चाहते हैं Zidane, लेकिन is Zidane going to happen to PSG? If Zidane comes, can he convince, basically a real ex-Real Madrid manager can convince Neymar to stay at PSG? It'd be interesting. So इसलिए मैं बोलता हूँ ये टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोला था वीक है एब्सोल्युटली. तो यहाँ पर सादिक भाई कैसे हो? सादिक भाई, थॉट यूर ऑन वेकेशन. लेट मी नो आप वेकेशन से वापस आ गए तो, बिकॉज आई एम प्लानिंग अ रियली इंटरेस्टिंग सीरीज फॉर द वर्ल्ड कप. और मैं डिस्कस किया हूँ दिस सीरीज along with Fateh and Michael Talks Football. So couple of them as well. So let me see if I can get a few more ultras, and we'll do a very interesting series in the World Cup. So let me know if you're back on vacation. मैं कल से शुरू करने वाला हूँ hopefully. Absolutely great to see Sadiq bhai. We have England Germany. Yes Tuesday को है. एक ही चीज भाई कर रहे हैं watch along England में. चलो great है. Now Italy doesn't give the champion vibe. टाइम आएगा यार, इटली का भी टाइम आएगा. इट्स अ साइकिल, लाइक ऑलवेज से. फ्लॉप काकू बात करेंगे उसकी बात, और उसकी बात क्यों करेंगे. नाउ द बिग न्यूज इज ऑब्वियसली, मैं नेमार का बता दिया, हकीमी का बता दिया, मेरा वर्डिक्ट, आप अपना वर्डिक्ट बताइए. आई एम सेइंग दैट लुकाकू टू लीव चेल्सी, भाई इट्स लिटरली 50-50. बहुत ही डिफिकल्ट है अभी बोलना. आई टेल यू व्हाई. एक होता है कि क्या चाहता है बंदा, जो एकदम ही मतलब ऊपर का फ्लोर खाली हो गया बंदे का, ठीक है. इफ इट्स ट्रू, अगेन इफ इट्स ट्रू, बिग इफ, और मुझे लगता है ट्रू है. मतलब अपने आप नहीं बनती है स्टोरी, बार बार अपने आप नहीं बनती. तीसरी बार बनती, सेकंड टाइम हाँ उसने बंद कर दिया था अपना एजेंट का मुंह, लेकिन भाई वो एजेंट चेंज किया है, राइट. एंड देन अब अगेन स्टोरी आ रही है भाई, द टेलीग्राफ yesterday that we told about that यार Lukaku is really trying to go to Inter Milan and to Italy in general. It is for real. और इंटर मिलान के साथ बातें हमने शुरू कर ली है, as per some reports saying that 20 million is what we are expecting as a loan fee, और बाकी in basically installments or whatever it is over a multi-year loan deal, जैसे हुआ था टॉरेस से जो छुटकारा मिला था ना to AC Milan, something like that happened. लेकिन यार रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि for some strange reason we were linked in the week to Lautaro Martinez. भाई Lukaku wanted to play with Lautaro Martinez. First of all, Lautaro Martinez हाँ brilliant किया उसने फिनल्स में, और generally last few months में he has come back to form after that terrible run of form in January February. फिर भी भाई, what are you talking about? How can Lautaro Martinez fit Chelsea as a single man? He cannot. He simply cannot. हम दो अपफ्रंट नहीं खेलते, so I don't see that fitting at all. हाँ, अगर he is coming to Chelsea and Inter will be left with nothing, then so be it. लेकिन is that real for Inter as well? No. I think it's very important for Inter. So I don't see that happening either. तो मैं बोलता हूँ ये weak for Lautaro coming to Chelsea, लेकिन Lukaku going to Inter Milan might be a possibility. अच्छा, अगेन आपने थंबनेल में देखा है, मैंने डाला है Lewandowski Lukaku. हम as Chelsea fans, as per reports, were expecting that Lewandowski will be the replacement, ideal replacement option for Lukaku. और by the way यार, जो भी देख रहा है, आप याद रखना, we will be discussing many clubs यहाँ पर across Europe. So stick on till the end and do put in your comments. I'll come to the comments one by one. लेकिन हाँ, absolutely मैं बोल रहा हूँ कि यार Lewandowski to Chelsea नहीं होने वाला. क्यों? Because Fabrizio Romano has actually confirmed that Lewandowski clearly wants Barca only. It is clear. और उसने personal terms agree भी कर लिए बारसा के साथ. So it is all about Barcelona and Bayern Munich talking and agreeing a fee. So that is why I don't see that happening. अच्छा, by chance Lukaku को खरीदने के लिए तैयार हो जाती है इंटर मिलान at the deal that हम propose कर रहे हैं, और Lukaku agent wants, who is the replacement? कौन है भाई replacement Chelsea में? मतलब surely we are not going into a season with Havertz and Broha as your strikers. Absolutely not. Broha ka bhi basically there are a lot of reports with other clubs interested still. David Nunes, yeah, he was also linked. लेकिन भाई David Nunes क्या किया है मतलब in the Premier League? I know he's superb. I know he's a new player. We should look at new players as well. लेकिन is he having the leadership that we expected from a Lukaku? नहीं. Lukaku ने भी नहीं किया है, हगा है proper. लेकिन भाई तुम क्लियर करो अपने माइंड को. You have to really understand कि Chelsea को ऑफलोड करना है almost impossible है Lukaku का भी. Okay, even if they do, we need a proper replacement of that caliber, at least on paper. नहीं है भाई, कोई नहीं है. मतलब please let me know who are the available strikers for Chelsea. That is why I'm saying Lukaku to Chelsea probably looks more likelier compared to him going to Inter Milan. As much as मैं चाहूंगा कि ऐसा प्लेयर सड़े नहीं Chelsea में और सड़ाए नहीं बाकी लोग को, but
यार भाई तो आके क्लियर कर ले वापस से। यू हैड अ चांस। कल इटालियन रिपोर्टर ने उसको पूछा था कि कैन यू टेल मी व्हाट इज द ट्रुथ, ही सेड नो कमेंट्स, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस। आर यू सीरियस? मौका था भाई। एनीवे डेम्बेले पर भी आएंगे रॉबिन, मैं स्टार कर रहा हूं इस पर। नेमार इज नॉट जॉइनिंग चेल्सी और बडी सेज हकीमी नेमार इज वेरी वीक नाउ। Fair enough. Dembele to Chelsea almost done. Yes, that's what I'll come to next. कहाँ देखते और देखते जोसे मोरिन्यो इज इन पीएसजी टॉप ऑफ लिस्ट। इंटरेस्टिंग स्टार करके रखता हूँ। चेल्सी शुड गो डेम्बुलेंस, इट्स ओके। आई फील यू शुड लेट द यंगर पीपल नो अ बिट अबाउट व्हाट लियोनार्डो वाज एज अ प्लेयर इन मिलान एंड ब्राजील। अरे भाई साहब एब्सोल्युटली भाई, मतलब व्हाट लियोनार्डो वाज। हमने एक्चुअली सादिक भाई, आपने शायद पता नहीं वर यू देयर इन द वॉच रूम, हमने डिस्कस किया था। फतेह वाज इन द हाउस, द इटालियन फैन, एंड यू नो माई सेल्फ ऑफ कोर्स, यू नो फॉलोइंग एसी मिलान ओवर द इयर्स। Like for me, Leonardo as a player, what he was a different level in terms of leadership, in terms of basically the the people who took the things by the scruff of the neck. He was one of those players. But again, as a director, I'm not sure it has worked, because I think it has worked. I think he's trying to dictate things. That's what I believe. Again, I might be wrong, Sadiq bhai, but you might want to add. But हमने detail में discuss किया था Sadiq bhai, and I'll come back to that for sure. Who do you prefer as manager for PSG, Zidane or Mourinho? Well, I couldn't care less, honestly speaking. लेकिन obviously Zidane, I would like to see him in management again. That's what I would say. Jose Mourinho को मिल गया भाई अपना घर रोमा, वहीं रही है, अच्छा है, मतलब he's loved. Let him be there, I would say. Absolutely. Nowadays Italy doesn't give the champion vibe. Well, we'll come to that. Jose Mourinho और Mancini will replace PSG manager. Okay, Mancini, I don't think so यार, अभी इटली का rebuild है. From what I know, 2028 तक है उनका शायद. I might be wrong, but हाँ, he will stay there. It's a home-based vacation. Okay, fair enough. कोई नहीं, मैं ना करता हूँ आपको मैसेज. मैं जानबूझ के मैसेज नहीं किया, थिंकिंग दैट सादिक भाई को डिस्टर्ब नहीं करते वेकेशन पे, तो बट मैं करता हूँ आपको मैसेज करता हूँ स्ट्रीम के बाद. पहले आज रात को भी मैं लाइव हूँ, मतलब आई डोंट नो इफ यू वांट टू अकम्पनी मी, डू लेट मी नो. आई एम लाइव एट मिडनाइट for Italy Germany, so do let me know for that as well. Ankit bhai, Lewa का प्राइस 40 million रखा है Bayern ने, we should go all out for him. सौविक, थैंक यू भाई बोलने के लिए. पता है मतलब 40 million is not peanuts. हम आज के जमाने में बोलते हैं जिस 40 million, it's too much, you know, for a 34-year-old is too much. लेकिन भाई, the guy will still be at this level for next 18 months. I am telling you, 18 months के लिए कम से कम रहेगा. I know प्रीमियर लीग में नहीं किया है, but if you see his gameplay, it absolutely suits Thomas Tuchel, absolutely. लेकिन प्रॉब्लम ये वो खुद आना चाहता है कि नहीं. I think it comes down to that. And as per reports, he just wants Barca or nothing. So he might, there's a slight chance, knowing Oliver Kahn, he might just stay at Bayern. Who knows? But हाँ, probably 99% वो छोड़ेगा Bayern Munich, or as I said, mighty to leave Bayern Munich, and I would say it's mighty to join Barca as well. Dembele to Chelsea almost done according to Talk Sports. Yes, अरे भाई लुकाकू का ऊपर का फ्लोर नहीं खाली क्या होगा. Hey Ankit, just while in the house, big up to you. Hello as well. And yes, people, I'm seeing over 40 people joining. Hopefully everyone has liked the stream, because we are going to be discussing every top club and every major transfer story possible of this week. We are going to recap and take in your views as much as possible. हाँ, अगर आपको प्रायोरिटाइज करना है कमेंट्स, तो यू नो हाउ टू डू इट, यू नो बाय सुपर चैट, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, बट आई विल ट्राई एंड टेक एज मच एज कमेंट्स एज पॉसिबल. लेमन, हेलो अंकित भैया, व्हाई नॉट चेल्सी गो फॉर पैट्रिक शेक अगेन. मतलब आई नो रिपोर्ट ये भी है, आई थिंक स्पार्ता प्राहा का एक स्ट्राइकर साइन किया है बायर लेवरकुसेन ने, लेकिन आई आल्सो अंडरस्टैंड पैट्रिक शेक हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड. हाँ, इन टुडेज डे एंड एज डजंट मीन फॉर नथिंग, लेकिन यू नो व्हाट इट इज, राइट? Price बहुत ही हाई रहेगा. That is the only thing. Lautaro and Lukaku swap deal will be very good. I don't think so. I think we'll be fools to do that. Come on. Lautaro, as much as वो फॉर्म में है, he's nowhere close to Lukaku. Let's be honest about it. ठीक है. Lukaku is वो हगा है प्रॉपर, जितना अच्छे तरह से हग सकता था उतना, तो उतने अच्छे तरह से हगा है, लेकिन ऑन पेपर एंड इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी ही इज फार अहेड. प्लस ही इज अ 98 मिलियन स्ट्राइकर. आप स्वैप डील नहीं कर सकते हो, वो बेवकूफी होगी. अंकित भाई, लेवेंडोव्स्की तो छोड़ दो यार, बारसा यार, वो मेरा मन है, लेकिन वो बारसा ही जाने वाला है. मैं बोला माइटी. चेल्सी शुड गो ऑल आउट फॉर डेम्बुलेंस. ओके, आपको बारसा से डेम्बेले यार, डेम्बेले अभी तक मिला नहीं है, मतलब डेम्बेले इज नॉट क्लोजिंग द बारसा चैप्टर. दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. हाँ, let's talk about डेम्बेले. अच्छा, let's talk about the wide wingers at Chelsea who are needed. ठीक है, एब्सोल्युटली. जियेश अगर आता है लेफ्ट फुटेड विंगर, देन जियेश माइट गो.
कहाँ जाता है? पॉसिबली एसी मिलान लुक्स लाइक, बिकॉज एसी मिलान को एक चाहिए होगा विंगर इफ राफेल लियाओ गोस तो इट्स डोमिनो। लेकिन डेम्बेले का प्रॉब्लम क्या है? डेम्बेले का प्रॉब्लम है द सैलरी। Yes, as per reports, we have agreed upon a certain wage, और इट इज ऑन। लेकिन यार आई थिंक फाइनल जवाब नहीं मिला है डेम्बेले से, सो मे बी इज वेटिंग मंडे तक जवाब जानने के लिए बारसा से कि यार आप काउंटर ऑफर कर रहे हो कि नहीं। तो ही इज ऑफर शॉपिंग, सिंपली पुट ऑफर शॉपिंग समझते, वो कर रहा है डेम्बेले अभी। लुकाकू इज नॉट वेरी गुड बट वेरी ऑनेस्टली, बट बाय द वे डेम्बेले टू चेल्सी, मैं बोलता हूँ इट्स लुकिंग माइटी, डेफिनेटली इट्स लुकिंग माइटी गिरी भाई साहब। Lukaku is not very good, but very honestly, in his worst season, he was the best player. I would say keep him one more season. That way, see, I get your point. I know what you're trying to say. लेकिन he was far from the best, mate. Come on, वो best तो नहीं था, लेकिन 15 goals मारा है, तो technically in terms of goal scoring, you can say that he was the most important player. लेकिन best तो यार far from it. Let's be honest about it. And we have Inter fan in the house, so I'll come to Advai's comment and beyond. लेकिन we have Nicola in the house. Lukaku will 100% leave Chelsea. Nicola, you tell me, bro, as in, do you want Lukaku in Inter? Really? Do you want such a mindset person? Like, trust me, like he was, I know, a leader there. But what he's turned out to be, man. Schick has extended, absolutely is extended, like I said as well. Lekin, Debulance may bring unpredictability to Chelsea's attack. Very good point. Very good point is, okay, absolutely, he just renewed. Nipun ne bhi confirm kiya about Schick. Dembele to Chelsea almost done according to reports. Yes, yes. Hit the like button, guys. Hit the like button, and do not forget to subscribe to Almighty Blues FC, Almighty Sports Plus, and Football versus Cancer. तीनों का लिंक है नीचे. Please do it. Means a lot. ये तो एक ट्रेडिशन है, हो गया है. Chelsea always gets Barca's good players. अरे सीरियसली ये कब हो गया? मतलब ये तो नया ही है. जूस कंटेंट टू बारसा. चलो इसकी बात कर लेते हैं. अच्छा, इतने सारे बेसिकली स्ट्राइकर्स और विंगर्स की बात कर रहे हैं हम. व्हाट अबाउट डिफेंस ऑफ चेल्सी? तो बारसा की भी बात कर लेते हैं साथ साथ में. चलो, तो जूस कुंडे टू बारसा इस वीक में वापस से शुरू हो गया. भाई बारसा जो इतने डेट में है और उनका सीवीसी डील कैंसिल हो गया. आई नो दे आर आल्सो गोइंग फॉर वन मोर स्पॉन्सर व्हिच इज काइंड ऑफ इमिनेंट. फिर भी भाई मतलब हाउ आर दे एबल टू अफोर्ड जूस कुंडे? अगर जूस कुंडे चेल्सी के लिए सेविया आर कोटिंग 65 to 70 million euros, why would they be quoting less to Barca? Come on. And that's a direct rival, technically speaking. याद रखो, इस सीजन में सेविया और बारसा वर फाइटिंग फॉर द टॉप 4 स्पॉट, टॉप 2 एक्चुअली, राइट? और सेविया नीचे गिर गई थी बाद में. तो आई वुड से जूस कुंडे टू बारसा वीक, डेफिनेटली वीक. जूस कुंडे टू चेल्सी मैं बोलूंगा माइटी. मैं चाहूंगा नहीं, especially after last night का performance. I don't want him, man. I don't want him. I want him maybe at 35 million, absolutely. But double the price? No. But Chelsea लेने वाली है because we are so advanced and I don't think we'll go back. मतलब as per reports, हमने जो लास्ट ऑफर दिया है ना, वो है आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 60 million euros plus 5 million add-ons. वो दिया है ऑफर, और मे बी 55 plus 10 होगा, one of those two, right? And that is good enough as per Chelsea's management. वो good enough होना चाहिए considering especially last night का performance. तो I would say Jules candidate to Chelsea definitely looks mighty. लेकिन we need another person and looks like वो 3 the back ही खेलेंगे Tuchel because going with wing backs etc. What about Barca? If Jules Koundé नहीं मिल रहा तो what are they getting? Koulibaly. अब वो भी सडन से ठंडा हो गया. क्यों ठंडा हो गया? Koulibaly to Chelsea थोड़ा strong हो रहा है आज. You know why? Because of the Senegalese connection. Apparently, as in it is basically Edouard Mendy, who can do something out there. Or Koulibaly, the fact कि previously भी है, आपको याद है तो with Napoli we spoke a few years ago. We've had talks with Koulibaly. Or of course he knows that Chelsea needs a leader, so he'll probably be playing. Plus the way that Chelsea plays ना is far easier to settle than a Barca, I feel, क्योंकि उनकी defense तो पूरा ही मतलब basically kind of needs revitalizing. For me, Koulibaly to Chelsea, all of a sudden it's looking as closer to mighty. तो Koulibaly to Chelsea अगर 30 million euros में आता है, bring it on, man. Jules Koundé 60 million तो 90 million euros तो वहीं चले गए भाई पानी में. हाँ ठीक है. और बाकी बचा कौन जो हमारे साथ लिंक हुए थे और मैनचेस्टर यूनाइटेड और बारसा के साथ भी लिंक थे? Obviously one is Pau Torres to Manchester United. चेल्सी नहीं आने वाले. अगर बेसिकली Koulibaly और कुंडे आ जाते तो पाउ टॉरेस बचते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए. लेट्स सी हाउ मच मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन शेड. बास्टोनी इज लेफ्ट. हम लिंक हुए थे उसके साथ इंटर से, लेकिन अगेन बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग विद चेल्सी, मुझे लगता है Koulibaly माइट जस्ट कम, कुंडे माइट कम, तो इसलिए बास्टोनी
may not come. Koulibaly is not a natural left center back. Like again, like I'm saying, there is an amount of flexibility that it gives compared to a Bastoni, जो three in the back में ज़्यादा खेलते हैं. So I would also prefer Koulibaly over Bastoni, even though वो इतने young नहीं है. Guardiol very very strongly connect हुए थे चेल्सी के साथ. जोस्को Guardiol of Leipzig, he has apparently said कि नहीं मैं लाइप्जिग में खुश हूँ. तो looks like Guardiol will be staying put despite वो एक left back option भी होते, left center back option भी होते. I was looking forward to look at him at Croatia versus Austria last night. लेकिन unfortunately Guardiol wasn't available or wasn't fit. तो Guardiol wasn't playing. एक जन जो खेल रहे थे वो थे सोसा. Sosa of Stuttgart was playing for, of course, we are talking about very much Croatia here. Of course, Stuttgart के left back है. सादिक भाई ने रिपोर्ट दिया था लास्ट, मुझे याद है. We shared it on screen, and as per the scouting, he has a good cross in him. He has a good kind of gameplay on an attacking front. Defensively, he is better than Alonso, so definitely it makes sense. But does he score enough goals? Not as many, but he could score. So is good on paper as per the scouting. लेकिन did I like him for Croatia? No, मैंने देखा है, मतलब I know. Honestly, I didn't watch every minute of the game. लेकिन watching the highlights, I didn't like him as much. I know it's just one performance, and I've watched him a little bit of Bundesliga in Stuttgart. लेकिन again, Sosa to Chelsea, मैं बोलूँगा है अभी weak है. मतलब I wouldn't want him either. तो left wing back rather just keep Emerson, मैं तो बोलूँगा, right? Emerson वापस आए हैं. Sell Alonso to Barcelona. I know Barca fans would like him. I think he's not as bad. तो दैट इज व्हाट आई एम सीइंग द रियलिस्टिक पिक्चर. चेल्सी फैंस, आप बोलिए क्या लगता है, आपका डिफेंस आपका रेडी है? तो जहां तक मुझे लगता है इट विल बी चिलवेल विद ऑफ कोर्स योर बैकअप बीइंग एमरसन, लेफ्ट सेंटर बैक पॉसिबल ऑप्शन बीइंग Koulibaly, राइट सेंटर बैक बीइंग योर कुंडे, ऑफ कोर्स थियागो सिल्वा इज देयर, लेवाई कॉलवेल शुड बी कमिंग बैक, वो एक स्पॉट रखेंगे. चालोबा. तो 5 सेंटर बैक्स है. That will allow us to go 4 at the back or 5 at the back, so enough options. Right back है, obviously you have Dujon Sterling as a backup. Aspilicueta hopefully रहेंगे as basically a squad player, and of course we have Reece James as a starter. So I think 5 wing backs slash full backs, 5 center backs, that makes the defense. आप बोले Chelsea fans and even neutrals, what about the DM? अच्छा, I'll come back to DM of Chelsea and I'll take some comments उसके पहले, नहीं तो people बोलेंगे भाई भूल गए क्या हम लोग को. चलो यार ले लेते हैं. लकाका भी तो चेल्सी, कैसा लगा मेरा मजाक? अरे भाई वो मजाक बनकर रह गया यार, मतलब कोई आइडेंटिटी नहीं रही भाई. ग्रो अप मैन, बी अ मैन. City is close to signing Kukurea. Thoughts? This looks absolutely close. I would say Kukurea to City works brilliantly because City का जो है ना, the way they play, they don't expect their fullbacks to kind of score goals. They play fullbacks and not wingbacks. they join in midfield, but Kukurea is sound defensively. तो वो एक problem था. I saw in the Real Madrid game, it'll be better than what it is. So I think it's an upgrade for sure. Okay, Matthias Nascimento. Okay, let me check it out as well. I'm starting this. Italy or Germany? I think Germany. But again, Italy may have be Chelsea player, so I don't mind either. Well, I'm neutral to be very honest. Chelsea should go for Matthias Nascimento. He will be a gel. Let's see. Matthias Nunes is linked to City, I know. Why Chelsea going suddenly for Lewandowski? Trying to hijack Noni. So Giri bhai, it was known that Tuchel likes Lewandowski. Who will not like Lewandowski? And once we heard that he's available, and once एक news आई कि Lukaku जाने वाले, आप बोलो गिरी भाई साहब, in world football, who is an ideal replacement for Lukaku at this point in time? जो not the Lukaku जो था चेल्सी में तो for the last few months, but the Lukaku जो इंटर से आया था. Who is that guy who can replace and who's affordable? Probably Lewandowski would have been one of the options. लेकिन Lewandowski खुद नहीं आना चाह रहे compared to basically Barca. Pulisic to Liverpool, news coming. Yes, इसकी भी बात करेंगे quickly. Do Spurs consider as top club? Just a banter? Well, अभी तो यार आप बोलोगे definitely. Schick just signed a contract, Leverkusen. Yes, absolutely. If I'm being honest, we all are overhyping Darwin Núñez. Yes, but again, Vlahovic, a lot of people said, yeah, he's overhyped, but he is the real deal. I really feel that. AD Sanford for big up, yeah, big up to you as well, and people will check him out. Robin saying Lukaku for Chelsea was what Pogba was for us. Great point. Expectations are really high. The performance not so much. Problem Robin saying kya hai na? It's about Lukaku being a striker and we needing goals. We needing the presence. We needing the leadership. Versus a Man United, जिनके पास फिर भी थे a lot of problems, as in people to replace.
ब्रूनो फर्नांडिस की साइनिंग हो गई थी, एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइनिंग फॉर मैन यूनाइटेड. ट्रस्ट मी, if ब्रूनो फर्नांडिस नहीं होते तो इमेजिन, if रोनाल्डो ब्रूनो फर्नांडिस नहीं आते मैन यूनाइटेड में, what it would have been last season. Just think about it. पैट्रिक शेक नहीं होने वाला. आई थिंक इट्स वीक. गैब्रियल जेसूस को ले सकते हैं क्या, स्टीलिंग अ डील फ्रॉम आर्सेनल हैंड्स? नहीं यार. गैब्रियल जेसूस मतलब अगेन ग्रेट प्लेयर, वेरी वेरी वर्सेटाइल, लेकिन प्रॉब्लम है ही कैन नॉट बी योर प्योर नंबर 9. आई डोंट सी दैट इमीडिएटली. तो ही माइट वांट टू गेट बैक टू दैट व्हाट ही यूज्ड टू डू फॉर ब्राजील. लेकिन हाँ, मैं बोलूंगा गैब्रियल जेसूस आर्सेनल के लिए बहुत अच्छे फिट नहीं होने वाले. दैट्स माय कॉल. And same goes for Chelsea as well. By best player, I mean a best scorer. Okay, absolutely. I kind of got it that way. आज केन हैट्रिक आ रहा है. वेल, हम टीम्स देखेंगे करीबन 9 बजे while I talk about other clubs. By the way, over 60 people joined, so hopefully यार सब लोग ने लाइक कर दिया stream. I'm hoping that we have gotten over 100 likes and we are on the way to 300 likes. So let's go that way, and we definitely need that. But yes, do not forget to subscribe as well in case आपने नहीं किया है. यहाँ पे I came on here after watching women's singles final French Open. Lewandowski was there, maybe to support fellow Polish player. Okay, but he's in Paris. Okay, interesting. I think Zidane will come to PSG. What are your thoughts? Like I said, मतलब people push रहे थे Zidane की Mourinho, कि anyone else. Like मैं तो Mancini even. I don't think Mancini will leave. I don't think Mourinho will leave. So Zidane to PSG, I would say mighty, and works well. Barcelona going for the Bank of America deal. Yes, आपने ही बताया था शायद. Absolutely. But again, यार, they are under a lot of debt still. तो अभी भी I think Kunde to Barca, मतलब think about it, Dubyanshu. They would rather go for a Koulibaly and another player rather than Kunde. मतलब think about it. I'm just putting it out there. क्योंकि already they have young centre halves, right? They already have young centre halves. They want to replace a PK in the long run, at least for the next year, right? So मैं बोलूंगा it should be basically a Koulibaly if I am being a Barca fan. If I am, right? लेकिन हाँ, as of now they have Christensen. They have obviously, as in Araujo hai, they have Eric Garcia. So a lot of junior kind of or young centre backs hai. I think they want some leadership there. Again, Dani Alves, end of contract hai, so I don't know about him. What's the situation at right back? So वहाँ पर भी interesting होगा. Serginho Dest भी काफी young है. Your opinion on Barca and Madrid's raids on Chelsea players? Well, interesting. मतलब मैं तो बोलूँगा Barca तो are kind of, they are smart. They are knowing when to kind of go. Even Madrid are smart that उनको पता है कि यार they are ending the contract, or they have already started talks, behind the scenes January से. पता है वो बात. As soon as the rumors started about Chelsea's future and all those things. लेकिन अभी the difference being that Burley और team आ गए हैं. So I think things can be changed when it comes to an Aspilicueta, for example. If अगर Jorginho निकलते हैं Chelsea से, we need an Aspilicueta. We need a captain on the pitch. So definitely I would say that अभी वो बंद होने वाला है और नहीं मिलने वाले Chelsea के players is what my guess is, apart from maybe Alonso, because Alonso himself wants to go. Again, that's the difference. Kunde, we can't afford Kunde, dude. He's 60 million, in my opinion. We are out. Koulibaly or Martinez पे ले पाएंगे. मतलब हाँ, Martinez is not a very bad option. Lisandro Martinez. Jose Mourinho to PSG, नहीं यार, मुझे नहीं लगता ये होने वाला है. Your opinion on Barca पढ़ लिया मैं already. Chelsea का KDB और साला जैसे प्लेयर को जाना कैसे दिया यार. ऐसा था ना कि उस समय इतने सारे प्लेयर्स थे. मतलब एक तो 4-2-3-1 खिलाते थे Mourinho, और दैट 4-2-3-1 में जो कैम थे ना, ऑस्कर, he expected that person to be doing a lot more work. मतलब वर्क रेट ज्यादा चाहिए था, and someone who had a long shot. So De Bruyne actually does both. I'm not saying he does not do. लेकिन आई थिंक एक मैच था, FA कप गेम था, if I remember right, वहां पर De Bruyne का एटीट्यूड Mourinho did not like. उसके बाद he dropped him, and then that's it. The end हो गया. मतलब वही है ना, एक कम्युनिकेशन गैप था उस समय, और he was too young, so Mourinho also did not think very hard about it. We already had Oscar, we already had Mata, 2 times player of the year, और prime Mata मैंने बताया, in various streams this week, that he was one among the best in terms of, his एक hole में रहते थे, और he used to play balls in spaces that no one could see, right? So Mata was brilliant. Oscar was very good. बहुत ही brilliant start था. I remember the Juventus goal. Everyone remembers that. Check it out on YouTube. तो इतने अच्छे स्टार्ट से, प्लस विलियन had come. Willian with his work rate. A lot of people हंसेंगे जो recently follow कर रहे हैं विलियन को. मतलब I won't have any qualms about saying it. From 2014 to 2018, my favorite player in Chelsea was Willian. And trust me, it is. Obviously, I'm not counting John Terry and Eden Hazard, the goats of Chelsea. But apart from John Terry and Eden Hazard, for me, it was Willian. Really.
मुझे अच्छा लगता था, और ऑफ कोर्स आई लाइक डेविड लुइस एज वेल बिकॉज ही वाज अ कल्ट हीरो. बट अगेन वो ये कि वी हैड वर्क रेट ऑफ विलियन, वी हैड द टैलेंट ऑफ हजार्ड, वी हैड द टैलेंट ऑफ माटा, वी हैड ऑस्कर. देन आई थिंक लेटर ऑन इट गॉट आंड्रे शर्ले. सो इतने सारे प्लेयर्स ऑप्शंस थे ना चेल्सी के पास, and then they let them go. I don't think Salah also got a lot of chance in the second half of the season when he came, right? Aspi is staying or not? I my gut is saying he's staying. मतलब मैं बोलूँगा he's staying because yeah, he's not a starter, he's not great. Even Barca, I'm very surprised at Barca going. I know Dani Alves kind हो गया contract, but he's not a starter for Barca either. तो थोड़ा सरप्राइज हूँ मैं. तो वहां भी स्टार्टर नहीं है, यहाँ भी स्टार्टर नहीं है, तो यार आप चेल्सी में रहो ना. That's what I would say. I know he wants to go to Spain. Let him go next year, man. I'm pretty sure next year तक इतने बुरा नहीं हो जाएंगे. Lewandowski to Barca is looking very strong. Lewa to activate the Article 17, which will allow him to buy himself out for just 24 million, and now Bayern are very much interested in selling him now. Interesting point. Vianshu, thanks for sharing that. Yes, this was the news I was about to bring as well. Great news, Nipun. The news, breaking news being that Daniel Fark, yes, Daniel Fark, आपको मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, Daniel Fark है, his name is that, or Daniel Farker, as people say. He has been appointed ex-Norwich City manager as Borussia Mönchengladbach. और हम याद रखो, हमने कवर किया था, Borussia Mönchengladbach के जो मैनेजर थे, he stepped down, I believe recently. I think it was a director as well who stepped down recently because of various issues. So I think it is only fair to kind of get a manager now rather than later. So I think Daniel Fark, I think if I'm not wrong, he's a German, to kind of suit Borussia Mönchengladbach as well. So all the best to him. Kunde to Barca, in my opinion, is not an option. Barca doesn't have the 60 million to share out, even with new rumors of 60. Exactly. Even if they do, it is not very smart. It is not very smart. It's not my take, is because they have as many as I think 5 young defenders already. Apart from Jordi Alba, sab log young hai. So think about it. Is Chelsea still a stepping stone? Unfortunately, I have to admit it is. It is. And of course, Abramovich ka one of the aims was it should not be a stepping stone, or he had reached that almost in 2010, जो हम level थी in terms of our football, in terms of the players we were signing, between 2005 and 2010. Lekin again, it has gone back. We have gone back, I have to admit. And in a very strange way, as Mourinho, I love the guy. In a very strange way, उसने जो sellings की ना उस समय, maybe not because of him, maybe because of the backroom staff, we have gone back in terms of just being a stepping stone because we are not having those world-class players enough in our starting levels. Barcelona want a young centre back, and that's why we are. अरे भाई क्यों लेकिन क्यों? Eric Garcia young है, Andreas Christensen young है, definitely I would count him as young. Araujo भी young है. You have 3 young centre backs. Longley, I don't know if he's still going to be there, but again he's young. So you have 4 young centre backs. Why would you want another young centre back? I don't agree with that absolutely. बारसा से आपको इतने सारे अच्छे प्लेयर्स मिले हैं. बेलेटी, यार बेलेटी ना ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था भाई. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. वो 2006 वाला बेलेटी नहीं था, ठीक है. डेको भी ही वाज नॉट व्हाट यू गाइस हैड इन 2006-7. सो डेको भी फिनिश हो गया था. हाँ, फैब्रिगास आई एग्री, हमें ऑलमोस्ट प्राइम फैब्रिगास मिला था. पेड्रो भी आई वुड नॉट से वाज प्राइम, ऑल्दो बहुत अच्छे थे चेल्सी के लिए, बहुत अंडररेटेड, लेकिन वही है. डेम्बेले यार देखते हैं, मतलब कितना सैलरी मांगते हैं देखते हैं. Well, let's see. और City is close to signing कुकुरिया, मैंने ले लिया. नमस्ते अंकित भैया, कैसे हो? मस्त एकदम. और yes, we have over 70 people watching भाई, और थोड़े likes कर दो. Let's have over 100 people. Share कर दीजिए, मैंने tweet किया है. Let me actually retweet right away so that people can also retweet. But हाँ, again, you got to tell me what is it that you are expecting from your club to sign. और हम आने वाले मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैन सिटी, पीएसजी, यूवेंटस सब कवर करेंगे hopefully, and we'll look at quickly the lineup of England as well, hopefully in the next few minutes. Aspi stays, how come? Well, Aspi का clause ऐसा था कि 1 साल बढ़ जाता है, लेकिन club can buy him, ठीक है, at a peanuts kind of a cost, जो जीरू के साथ होता विद मिलान. मेरे ख्याल से we have learned our lesson with जीरू, we have learned our lessons, and the fact कि अगर मतलब I think ifs and buts है LJ, अगर एस्पी अगर जॉर्जिनियो लीव्स, ये मैं बोल रहा हूँ, अगर जॉर्जिनियो लीव्स, आई बिलीव एस्पी चाहिए, बिकॉज फॉर सम रीजन थियागो सिल्वा को कैप्टन आर्म्बैंड नहीं देते टुकल. दैट्स आई नोटिस दैट. और कांटे इज नॉट रियली द कैप्टन, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. मेसन माउंट इज टू यंग टू बेसिकली मैनेज एन एंटायर स्क्वाड. He cannot be the club captain so early is what my thought is. He can be a vice captain absolutely. So I am saying Azpilicueta is needed for that, and that's why we might talk him over, because
बारसा में भी वो स्टार्ट नहीं करेंगे, he'd be a backup, that's my opinion. अंकित भाई, I forgot to name लॉर्ड मलंग सार. भाई मैं बोला था मलंग सार के बारे में, आप चेक करियो. मैंने बाबा एंड यू नो गुरुजी एंड बेसिकली चिराग एंड करण भाई और आई थिंक रोहित भाई सब थे, हमने डिस्कस किया था यू नो क्या होंगे ऑप्शंस, कीप सेल लोन और ऑल दोस थिंग्स. एक और स्ट्रीम किया था उसके बाद में, क्लियरली बोला था मलंग सार है नहीं है सेम ही बात है. इट्स लाइक ऑलमोस्ट रॉस बार्कली फॉर मी. आई मीन रियली ऑनेस्ट, आई लाइक द गाय, गुड एटीट्यूड, लेकिन प्रॉब्लम है इज नॉट चेल्सी क्वालिटी. जब भी लुकाकू ने साइन किया था तभी मैंने बाबा को बोला था कि ही कैन बी अ फ्लॉप. हाँ ऋग्वेद, आपने यहाँ भी बोला था शायद, मुझे याद है. लेकिन वही है, मतलब हम होपफुल थे बिकॉज अनफिनिश्ड बिजनेस. उनका उसका लॉन्च याद है, मतलब मुझे वही लगता है यार, आप फिर से टुवर्ड्स एंड ऑफ द सीजन लग रहे थे थोड़ा सा ब्राइट स्पार्क था. अब फिर से यार आग क्यों जलाना, बुझ गई है यार वो आग, क्यों जलाना वापस. आपको मौका था कल, बोल दीजिए रिपोर्टर को. बट अगेन आई एम नॉट गोइंग बैक एंड अगेन ऑन दैट. चलो कोई नहीं. अंकित भाई, चेल्सी गॉट गुड टॉप प्लेयर्स फ्रॉम बारसा. एटू, एटू यार, नॉट फ्रॉम बारसा बट आई नो व्हाट यू मीन. यार इसका ना, मैं ना उस दिन आपने बोला था शायद, तो मैं एक्चुअली फॉलो नहीं किया हूँ. लेकिन आई विल ट्राई एंड डू अ स्काउटिंग रिपोर्ट एंड कम बैक ऑन दिस. बट थैंक यू जेनी टालिया. एनीवन नोज अबाउट दिस गाय, ऑस्ट्रियन बुंडेसलीगा, डू लेट मी नो. मतलब मैं फॉलो नहीं करता ऑस्ट्रियन बुंडेसलीगा एज मच, लेकिन हाँ आई हैव हर्ड अबाउट दिस गाय एट बेस्ट. एनी न्यू ट्रांसफर न्यूज फॉर चेल्सी? फहद, आप शायद लेट आए हो. मैं लास्ट 5 मिनट रादर 15 मिनट से चेल्सी की बातें कर रहा हूँ. लेकिन हाँ, वील मूव ऑन टू सम अदर क्लब एंड देन कम बैक टू चेल्सी फास्ट, सो स्टिक ऑन टू द एंड. PSG coach shortlist. Okay, interesting. Yeah, Rifat, what about Zidane? Yeah, what is the problem with Zidane? Why doesn't he want to come to PSG or vice versa? Let me know. Havertz is adapting well. False nine. हाँ, लेकिन एक striker enough नहीं है. That's the main problem. Clause वही था यार. Basically यार, if he plays a certain number of games, automatically it extends for 1 year. लेकिन इट्स जस्ट 1 ईयर, तो ऐसा नहीं है कि यार ट्रांसफर फी विल बी टू मच. तो मिल जाएगा आपको, अगर आपको सच में चाहिए पे करिए. लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे मैंने बोला, आई वुड रादर प्रेफर इन बीइंग अ चेल्सी अगर जॉर्जिनियो जाते हैं. दैट्स द ओनली कैविएट. वुड यू वांट चेल्सी सेल? अच्छा चलो, सेल की बात कर लेते हैं. तो क्विकली मैंने डिस्कस भी किया है. अलोंसो, गुड रिडेंस. मतलब आई लाइक द गाय, कल्ट प्लेयर फॉर श्योर, top player for sure, but not a league player. That's the problem with Alonso. ठीक है, Alonso, yes, we need our wing backs to score. We need our wing backs to join in midfield, but we need them to defend mainly. वो नहीं करता है enough. Emerson is better from that perspective. थोड़ा सा. So Emerson is a better backup than Alonso in my opinion, and Emerson gives us the flexibility to go forward at the back. ठीक है, that is one for one. Malang sir, I've already said. ठीक है, Timo Werner, I've already said in multiple streams. Yes, Timo Werner, you heard it right. Lukaku, I rather want Lukaku to stay and Timo Werner to go. You heard it right again. Timo Werner is a trier. He loves Chelsea clearly more compared to Lukaku. लेकिन problem is he's not as good. I know Lukaku has not been great, लेकिन वो भी basically is not as good in terms of consistency at all. हमें चाहिए 3 strikers जो consistent हो, at least 2 तो consistent होने चाहिए. और I would rather put my money on Lukaku जो form दिखा रहे थे towards the end, rather than टीमो वर्नर जो 2 हफ्ते के लिए दिखाया था अगेंस्ट रियल मैड्रिड एंड साउथहैम्पटन और वापस से गायब हो गए थे. ठीक है, तो आई एम इन दैट बोट. Who else? Obviously I think Jorginho I already named, because I can see Billy Gilmore coming as backup. We need a DM. I would prefer Declan Rice. हाँ, अगर हम जूल्स कुंडे पर इतना खर्च नहीं करते, we'll try and save some money for Declan Rice deal, and we need that deal because we are being linked to Bissouma, we are being linked to Sangare. अच्छा, by the way, Liverpool fans in the house, आप बोलिए भाई, what do you think about Sangare? I heard Sangare has been linked to Liverpool as well in the last couple of days. So, मतलब, do you see that happening? Sangare to Liverpool, मतलब PSV के लिए काफी impressive थे, but is he going to be jumping in terms of the level? I am still not sure. मेरे ख्याल से he's not a starter at a Chelsea or a Liverpool yet. I know maybe you can say that Konate आए थे भाई दूसरे लीग से and he did it, but come on, Konate came from Leipzig. Leipzig was still at a playing at a higher level in terms of competitions. Nothing against Eredivisie. I love Dutch football. Lekin Sangare has not done enough for me. So that's why he needs to be tested a little bit more or be a backup. That's what I would say. अगर ready है तो bring it on, man. Bring it on. I would love someone coming from the Dutch league. I know he's Ivory Coast player, but still. Who else is there in DM options? मतलब इतने options है ही नहीं. Problem यही ना.
चेल्सी के पास। हाँ, बाय द वे मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर लेते हैं, अबाउट टॉकिंग अबाउट डीएम, बिकॉज प्रीटी श्योर यू गाइस वांट फ्रैंकी डियोंग, ठीक है। तो लास्ट एक हफ्ते में क्या हुआ है फ्रैंकी डियोंग के साथ में? फ्रैंकी डियोंग के साथ में ये हुआ है कि बेसिकली मैन यूनाइटेड बता दिए कि हम तो रेडी है भाई बात करने के लिए, हम तो रेडी है, हमारा जो बात शुरू होने वाला है, बारसा ने बोला है वो है 80 मिलियन यूरोस प्लस 5 मिलियन यूरोस, तो 85 मिलियन यूरोस इज व्हाट वी आर टॉकिंग, और इट्स 75 फॉर प्लस 10, टोटली 85 मिलियन यूरोस का है, ठीक है। But Man United obviously would want the 75 million euros only. I think they are thinking वो doable है। प्रॉब्लम ये है कि अभी अटक गई है सुई। कहाँ अटक गई है? फ्रेंकी डियोंग के केस में अटक गई है। Why? Because he himself doesn't want to leave Barca. अब सीवीसी डील कैंसिल हो गया बारसा का, बारसा गोइंग ऑब्वियसली फॉर बैंक ऑफ अमेरिका डील, अगर वो डील साइन हो जाती है देन इज देयर अ नीड टू सेल फ्रेंकी डियोंग? मे बी नॉट। और मैं देख रहा था यार, बुस्केट्स, इज ही स्टिल प्राइम बुस्केट्स? मे बी नॉट, लेकिन श्योरली इज गोइंग टू स्टार्ट मैचेस। तो अगर बुस्केट स्टार्ट करेंगे तो आई कैन नॉट सी फ्रैंक केसी, जो नए साइनिंग है, मे बी ऑन द प्रॉमिस दैट वो स्टार्ट करेंगे। तो फ्रैंक केसी, फ्रैंकी डियोंग और बुस्केट्स तीनों तो नहीं खेलने वाले, बिकॉज यू हैव गावी एंड पेड्री। प्रीटी श्योर गावी पेड्री अटैक में नहीं खेलेंगे, दैट्स व्हाट मैं सोचता हूं, क्योंकि आंसू फाटी होपफुली फॉर बारसा फैंस विल बी फिट। डिपाई इज कमिंग बैक टू फॉर्म, सो यू नेवर नो, लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स वहां पर। बारसा के पास इतने सारे प्लेयर्स हैं, लॉर्ड ब्रैथवेट इन अटैक, जो कल आए थे एज अ सब्स्टिट्यूट, वाओ दैट वाज समथिंग। लेकिन हाँ, तो कमिंग बैक टू फ्रैंकी डियोंग, मतलब मुझे लगता है कि यार ये डिफिकल्ट है डील, ठीक है। अगर डिफिकल्ट है तो आई नो आई एम सेइंग काइंड ऑफ 50-50 अभी, बिकॉज इट्स कमिंग आउट टू फ्रैंकी डियोंग, इसलिए मुश्किल है। वी कैन नॉट से, हाँ क्लब की बात है चलती तो पैसे पर वी कैन से दैट मैन यूनाइटेड कैन इजीली शेयर 5 more million, 10 more million, ठीक है। वी नो इट्स मैन यूनाइटेड, you know, again Barca needs the money and they would also want Lewandowski to be afford as well as Kunde और Koulibaly, तो इसलिए उनको चाहिए पैसे डिस्पाइट द डील। लेकिन यार फ्रैंकी डियोंग की मर्जी है, तो आई वुड से 50-50। हाँ, अगर फ्रैंकी डियोंग जाते हैं तो देयर इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ डोमिनो अगेन। क्या होने वाला डोमिनो ऑन डीएम? Frenkie de Jong to leave Barcelona and going to Manchester United. Another person has been linked in the last 48 hours very close. You know who it is? Ruben Neves. Ruben Neves, the Portuguese defensive midfielder slash central midfielder who plays for Wolves. Ruben Neves जो लास्ट आई थिंक 18 महीनों से लिंक हो रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, और जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ लड़ाई भी किए थे। आई रिमेंबर जस्ट पोस्ट लॉकडाउन एक मैच था, आई रिमेंबर दैट क्लियरली, जो ब्रूनो फर्नांडिस का गोल होना चाहिए था, चाहे वो उस पर लड़ाई हो गई थी। लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट रूबन नेवेस? तो आई फील मतलब हियर इट आउट, मैं बोल रहा हूं, पीपल लिसन टू मी। फ्रैंकी डियोंग एंड रूबन नेवेस दोनों मूव होने वाले, ठीक है। Frankie de Jong will go to Manchester United and Ruben Neves to Barca. I am actually looking at it. Why? Because Ruben Neves can fit in a double pivot system, जो मुझे लगता है Barca will eventually go in. That's what I feel. मतलब because I think Gavi or Pedri, one of them will be in the hole. वो perfect रहेगा Barca के लिए. They might just change. और अगर नहीं होता है Frankie de Jong, तब तो easy है. Frankie de Jong stays at Barca और Man United get Ruben Neves, वो भी पॉसिबल है। तो इधर वे आई थिंक दोनों क्लब्स के पास मिलेंगे। लेकिन व्हाट यू प्रेफर बारसा फैंस? ऑब्वियसली यू प्रेफर फ्रैंकी डियोंग देन रूबन नेवेस। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, आर यू हैप्पी विद ईदर वे? लेट मी टेक कमेंट्स इसके पहले कि लोग गाली दे मुझे वापस। बाय बारसा राइट विंग पोजीशन, वी आर बिलिंग टू रफीनिया आफ्टर हिज प्राइस न्यूज़, वी आर लुकिंग क्लोजली एट गनाब्री एंड स्टर्लिंग। हाँ, तो ये स्टर्लिंग का लिंक हो रहा है बहुत क्लब्स के साथ, गनाब्री के लिंक हो रहा है रियल मैड्रिड के साथ, स्ट्रॉन्गर लिंक से अली गेमिंग। But I can understand Rafinha being expensive. Chelsea भी link थी, लेकिन now that he is expensive because of Leeds staying in the league, हम भी जा रहे हैं डेम्बेले के लिए। तो लेकिन the fact कि यार you cannot afford a Traore, you cannot afford a Rafinha, and डेम्बेले अगर छोड़ जाए तो बारसा के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है there, and that's why I can see why you're going for other options. Ibrahim Sangare is getting linked to Chelsea as a decent yes, absolutely, and Liverpool as well. Yes, हम करेंगे जर्मनी इटली, वी आर डूइंग द वॉच अलोंग 12 बजे, याद रखना यार, भूलना मत। इफ यू गो फॉर इब्राहिम देन इट विल बी लुकाकू टू, या होगा भाई, इस सीजन नहीं होगा, फ्यूचर में होगा, मार्क माय वर्ड्स। इब्राहिम संगारे इज अ बीस्ट। यस, चेल्सी कैन साइन डब्ल्यूएफ स्टार Mariano Diaz from Real Madrid. What happened to Italy? They won. बात करेंगे भाई, हम वॉच अलोंग में बात करेंगे। थॉट्स ऑन एस्टन विला ट्रांसफर्स? यस चेतन, गुड क्वेश्चन, बिकॉज दैट इज समथिंग हम करने वाले हैं। मैं बहुत ही पीछे हूँ बाय द वे चैट के, सो गाइस इफ यू वांट मी टू प्रायोरिटाइज लेट मी नो।
But certainly I will take a few comments now. I'll come to Aston Villa. I've just marked that. यार भाई इतना क्या शौक है गाली का? मतलब गाली सुनानी क्या लाइफ में? कोई नहीं, मतलब आई हैव गिवन, बट अगेन ऐसे थोड़ी होता है भाई मैं टेप रिकॉर्डर ऑन कर दो। देखो आपको कितने, चलो ये तो ले लिया था। ब्रो, हु इज विनिंग ला लीगा नेक्स्ट सीजन इन योर ओपिनियन? टू अर्ली टू से डीजी आयुष, बट गुड टू सी यू एब्सोल्युटली। आई टेक Koulibaly currently cheaper than Kunde and provides calmness in backline. Okay, fair enough. I would buy that for sure. What else? What else? जब डायरेक्ट पे करते हैं लोन तो पूरा ब्याज देना होता है। ओके, कोई नहीं, एक बार मैं और क्लब चलाने के पास भी चाहिए। ये क्या है? भारती में, ओके, भारती में टॉक्स चल रहे हैं। Barca wants all old or 30 plus aged players and sell young ones like Arthur, Frenkie, Ricky Puig. Yeah, actually ना, I don't think it's not about the age city. I think definitely planning a long term key. लेकिन for me it's about the money. It comes down to the money. Show me the money. वही है। Renato Sanchez, thank you मानव आने के लिए। Renato Sanchez being chased by AC Milan and Arsenal, great for both teams. Good replacement for Xhaka in Arsenal and Kessie in AC Milan. Good replacement मानव, लेकिन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं बोलता हूँ रेनाटो सांचेज ऐसा प्लेयर है जो बहुत ही हाइप्ड है। मैं बोलता हूँ इवन फॉर लिल ही वाजंट गुड ओवरऑल। आप देखो बिकॉज ऑफ द इनकंसिस्टेंसी दैट इज शोज इन फिटनेस एंड फॉर्म, वो प्रॉब्लम है उनकी। ही इज अ ग्रेट प्लेयर ऑन हिज डे, बट यू नो व्हाट आई मीन। मैं नहीं मानता, मैं तो खुद बोल रहा हूँ लुकाकू शुड स्टे। क्लियर योर माइंड, टॉक विद द मैनेजर एंड शट अप एंड स्टे एंड प्रूव दैट यू आर बेसिकली अ वर्ल्ड लीडर। दैट्स व्हाट ही शुड डू। मानता, आई एग्री विद यू। Best solution for all, Sterling to Milan and Lewa to City and Gnabry to Madrid. भाई साहब ये मस्त है। अंकित भैया, what's your opinion of Barca plays back three with Eric Mingueza and Araujo? यार ये नहीं होने वाला। By the way, Mingueza I think वो भी छोड़ रहे हैं। From what I hear, Xavi spoken to him. Let me know. Sid, DM me bro. I'll let you know. Molina is available in transfer market. Where will he go? Not sure. Yes, absolutely. Rest in peace. Big up to him. And of course, well, okay, interesting. 16 goals in 33 appearances. Also 1.92 meters tall. Club Brugge के player है. Transfer fee in the range of 10 to 15 million. Should they go for Jesus or buy this kid? I think they should go for Jesus if they're able to. Even a Sterling, क्योंकि यार उनके पास जीरू है जो अभी भी खेल सकते हैं in the Serie A. हाँ, maybe not for Champions League every game, but you know what I mean, right? Serie A में he can play. Origi है, so they have decent players. ऐसा नहीं है for again nothing against Serie A. You know that I follow it. Like मेरे ख्याल से it should be okay, you know, going for the second option. But yes, let's like the stream and subscribe to the channel. अगर नहीं किया है, it helps a lot. Just the press of a button. Come on, let's do that. ये कौन है भाई? ये कौन है? मतलब I'm not sure if I remember this guy. अच्छा, तो he is the final player, is it? Okay, नहीं, he plays for Club Brugge and Netherlands. Okay. Oh, Lang. Okay, Lang was basically अपना जो खेला था group stage में. I think Lang was one of the better performers against City as well in the first group game. Yeah, I remember this. तो Lang, I think बहुत ही अच्छा प्लेयर लगा मुझे, लेकिन अगेन इन द सेकंड मैच जो हुआ था, आई डोंट थिंक स्टूड अप निपुल। हैविंग सेड दैट, आई थिंक यार वही है, मतलब a player from Club Brugge maybe should move to Bundesliga first, I would say, or maybe like a team like Leicester. I'm just kind of putting it out there because Leicester might lose Tielemans. I'm just kind of putting. I know Tielemans is a central midfielder. Lang, if I remember right, he थोड़ा wide खेलते हैं, but you know, at the end of the day, they need a lot of players as well. A lot of players, you know, are touted to be leaving Leicester. Just putting it out there, right? As a Barca fan, चलो ये तो मैं पढ़ लिया था शायद। अलोंसो के लिए चेल्सी कितना डिमांड कर रही है बारसा से? मतलब आई थिंक दे लो भाई, जितना भी देना दे दो। मैं तो बोलता हूँ उतना है, बट आई थिंक आई प्रीटी मच श्योर कि यार हम एटलीस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7-8 मिलियन तो करेंगे एटलीस्ट। दैट्स व्हाट आई बिलीव सो। लेट्स सी डेम्बेले पर क्या अपडेट है भाई? डेम्बेले पर इतना अपडेट है कि यार चेल्सी का जो सैलरी का ऑफर है एज पर रिपोर्ट्स, हाँ मे बी 12 घंटा पहले गया है, 24 घंटे पहले नहीं गया था, लेकिन मंडे तक वेट करना पड़ेगा। डेम्बेले माइट बी शॉपिंग अराउंड और ही माइट बी वेटिंग फॉर अ काउंटर ऑफर फ्रॉम पीएसजी और बार्सिलोना, बट अभी लग रहा है एज पर द यू नो सोर्सेज दैट ही इज यू नो प्रेफरिंग चेल्सी एज थिंग्स स्टैंड। Views on Juventus' Cristiano Ronaldo, 134 matches, 101 goals, 22 assists, 5 trophies. Some people say it was a flop. No way, man. No way. Aryan, come on. If I'm not wrong, he was basically Lukaku was the MVP, I remember.
लेकिन आई थिंक द बेस्ट स्ट्राइकर एंड द गोल्डन बूट एंड स्टफ लाइक दैट इन सीरिया उसने जीता था यार, बट कम ऑन, you cannot say that he was a flop. Absolutely. और कौन बोल रहा है भाई, मुझे बोलिए. हाँ, only thing is he had to have more leadership to lead the team to a Champions League final. That was what their aim was and win it. वो नहीं हुआ. लेकिन apart from that, I don't think it was an issue. मेरे ख्याल से problem was Juventus, that the way they played overall, or of course the signings, the fitment, in Champions League mentality नहीं थी. मतलब otherwise, I think इस सीजन में हमने देखा है, it wasn't just Ronaldo, it was other factors that was a problem with Juventus. आज मैच है, डेफिनेटली 12 बजे हम वॉच अलॉन्ग करेंगे, तो डू नॉट फॉरगेट अबाउट दैट. नहीं यार नहीं, फुटबॉल की रिसेंट सीजन में जो इंजरीज हुई है ना उसको, और आई थिंक ही हैड ऑफ फील्ड इश्यूज आल्सो, सो अभी के लिए नहीं. एट वन पॉइंट आई सेड इट, यार ही इज बेसिकली maybe the rich man's Tammy Abraham. He's better than Tammy Abraham, he can do a little bit more. लेकिन वही है, he needs to show the consistency. अभी तो मैं अभी तक बोलूंगा he's not a starter for a top club. To get the best out of Lukaku, simply bring Lautaro, Martinez, problem solved. लेकिन हाँ, हम लोग वो सिस्टम खेलते नहीं है, that's the main problem. Okay. Man, Real Madrid should sign Lukaku and sell Benzema to Barcelona. Come on. I think we should trust Broha and Havertz and sell Sumit. We should, but is that enough? I don't think so. I think we need another striker. We really need, or we need a winger, someone like a Neymar. Just putting it out there, someone who basically scores you goals as well, who are reliable goal scorers. Maybe Nkunku. Talk about Nkunku. Manchester United basically going strong for Nkunku. Anthony links are suddenly going off the radar. तो मुझे लगता है कि अगर PSG नहीं छोड़ती है नेमार को, डिपेंडिंग ऑन द न्यू मैनेजर, मे बी, और मुझे लगता है अगेन Nkunku, I know he said that he might stay at Leipzig, लेकिन I feel looking at him last night, भाई वो होने वाला है next big thing. Trust me on that. I really believe that. So I see that Nkunku should be moving on. मतलब मैं देखता हूँ मूव होगा, और आई नो दैट टुकल के साथ उसने खेला नहीं है. ही वाज आउट व्हेन टुकल वाज इन एट PSG, बट अगेन आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम. आई फील दैट Chelsea, Manchester United can be options. Having said that, I think PSG is his preference. So I think तीनों में से एक तो definitely move होगा, is what I'm saying. Nkunku. Let's see. Why not Werner and Lautaro Martinez swap deal? फिर Lukaku और फाड़ेगा प्रीमियर लीग. हाँ गिरी भाई, बहुत अच्छा पॉइंट है. प्रॉब्लम ये है ना कि यार टूकल भाई साहब जो है, जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं 100%, वो खेलते नहीं है with two strikers up front. Okay, if he does also, there is an argument that Havertz deserves a place over Lautaro. Think about it. And then Lautaro will not be happy. Why same issues, So we rather have a Broha as a third striker and have Havertz and have Lukaku, who's already there. मैं तो ये प्रेफर करूंगा अगर Lukaku का माइंड ठीक हो जाए. Nasser and Campos trying hard for Zidane, but it seems like difficult. That's why they are exploring other options, and I guess Zidane is waiting for France job. Interesting. कोई नहीं. Yes. I saw this as well. Football Creeks, thank you. So I think they are trying different ways of getting money, simply put. Like, I don't think that's enough. Come on, वो तो I think it was an offer वो ले लिए. I don't think they're counting on that. Let's be honest about it. Bro has more league goals than Lukaku and Werner. Very good point. Inter से swap deal with Lautaro. नहीं, swap तो नहीं. Maybe money plus player, maybe. But again, Lautaro is not a great fit. भैया 120 million बहुत ज्यादा हो जाएगा चावल के लिए. नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ. हाँ, वो मैं कैवियट बोलना भूल गया वापस से. डेक्लन राइस अगर 90 से एक भी पैसा और मांग रहे हैं ना, मत दीजिए भाई. 90 भी नहीं, मैं बोलता हूँ 80 मिलियन कर देगी भाई. मरीना दीदी कर देगी. होपफुली मरीना दीदी रहे. पहले एंड्रिया बर्टा का, और ये हफ्ते ये भी आया था, एंड्रिया बर्टा फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड might come to Chelsea because he has been interviewed and he has been met with Marina and co, maybe as a succession plan, maybe for January. I hope so for January and not now, because अभी चाहिए यार someone who understands Chelsea Football Club inside out. और Marina knows it. As much as criticism है, but I feel that she has done the job as well. बहुत सारा talk about Hazard for 20 million after winning Champions League. That is something that Marina probably would have added. So she knows her stuff as well. So I think it's important. Along with she's worked with Petr Cech and stuff like that. तो Marina को रखो 2 महीने और. राइस का कम कराइए, राइस का दाम कराइए 80, maybe 90 billion. I would think about it, लेकिन I wouldn't break the record. Definitely not break the record or equal the record. Lukaku के जैसा नहीं होने वाला. Let's do that.
बट इफ नॉट बिसुमा, ही इज बीन लिंक्ड अगेन फाइनली. तो बिसुमा, एनडीडी, जो मैन यूनाइटेड का ऑप्शन है इफ दे डोंट गेट फ्रेंकी डियोंग, तो मे बी दैट. एमरसन नॉट वेरी गुड अप फ्रंट, आई वुड पे Alonso tax the. Okay, interesting. The only reason मैं बोला एमरसन because for the back में एमरसन is better. Think about it, Advait. Think about it. Your thoughts on Tchouameni to Madrid? Brilliant signing again. इस वीक में और भी न्यूज है. चलो रियल मैड्रिड की थोड़ी सी बात हो जाती है because I think Camavinga is French. ठीक है, Camavinga basically अभी रेस्ट कर रहे हैं. He is gone on record saying that I have basically spoken to Tchouameni. ठीक है, तो वो बात कर ली है. प्लस कैमाविंगा के एजेंट और Tchouameni के एजेंट आई थिंक इधर सेम है या सेम थे, ऐसा कुछ है. तो बेसिकली देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वहां पर. ऑब्वियसली बोथ हैव रिसेंटली प्लेड इन द लीगा, सो इट मेक्स सेंस फॉर Tchouameni टू कम देयर, गेट कन्विंस्ड. बट एट द सेम टाइम मैं बोलूंगा कैसेमीरो का क्या भाई. विल Tchouameni स्टार्ट गेम्स? ही इज स्टार्टिंग फॉर फ्रांस अभी, बट विल ही स्टार्ट कम द वर्ल्ड कप? मुझे लगता नहीं. मुझे लगता है पॉगबा विल कम टू द स्टार्टिंग 11, दे माइट गो फॉर द बैक अगेन. वो मेरा पर्सनल ओपिनियन. आप बोलिए आपको क्या लगता है. बट ग्रेट प्लेयर मैन, ग्रेट प्लेयर. लिवरपूल इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग इवन इफ माने लीव्स. हाँ, तो टॉकिंग अबाउट मैड्रिड एंड लिवरपूल, Tchouameni इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु वाज लिंक्ड, राइट? एब्सोल्युटली. लिवरपूल का क्या सीन है? लिवरपूल का ऐसा सीन है यार, साडियो माने ने बोला है भाई, I think 60 to 70% Senegalese people want me to leave Liverpool, so I will listen to them. तो indirectly बोला मैं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है. लेकिन at the same time, अगर जाते हैं, what is the replacement? Do they need a replacement? Now, whom do they have up front? They have obviously वो strikers जैसे खेल रहे थे last couple of months. So you can count on Bobby Firmino, you can count on Diego Jota being the strikers. Left wing में कौन options है? उनके options है Luis Diaz. Maybe I think Fabio Carvalho वहां खेल सकते हैं along with Cam position, right? Right wing में obviously Salah, and they have Alex Oxlade-Chamberlain and Harvey Elliott can also play. तो अब देखो अभी भी काफी सारे ऑप्शंस हैं. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने शायद मिस कर दिया एक ऑप्शन, लेकिन हाँ बेसिकली इतने सारे ऑप्शंस अभी भी है. तो इट्स नॉट लाइक एकदम डेस्परेट है. बट व्हाट माने brought to Liverpool, arguably he was a player of this calendar year for Liverpool. Correct me if I'm wrong. हाँ, Luis Diaz biggest impact, लेकिन Thiago brilliant improvement, लेकिन I think Mane was far more consistent than both of them in my opinion. तो these three players along with Salah are basically indispensable मैं बोलूंगा, इसलिए माने को रिप्लेस करना इजी नहीं है. लिवरपूल, हाँ, डार्विन नूनेज नॉट अ बैड ऑप्शन बिकॉज आई एम सीइंग डार्विन नूनेज टू लिवरपूल. मैं बोला था माइटी compared to Darwin Núñez going to Barcelona. I would say Lewandowski going to Barcelona, Darwin Núñez going to Liverpool and not Manchester United, because Liverpool में as it is there might be a chance कि उसको थोड़े first team minutes मिले. Plus अच्छा टाइम है to get settled in England because he has a mentorship of basically Klopp, Firmino and Partey, right? तो वो कर सकते हैं. तो I think Darwin Núñez to Liverpool looks mighty for me. Again, आप बोलिए मुझे. Milner, let's see if he extends. Absolutely. But I want Werner to stay. Okay, interesting. कोई नहीं. Let's agree to disagree. Fair enough. I respect that. चेल्सी अलोंसो, ये तो हो गया था भाई. रिपीट मत करिए क्वेश्चंस. अगर आपको प्रायोरिटाइज करना है क्वेश्चंस, देन यू कैन ऑलवेज सुपर चैट पीपल. देयर इज एन ऑप्शन. वी आर मोनेटाइज ऑन दिस चैनल, बट यस, दैट डजंट मीन दैट आई एम आस्किंग फॉर इट. आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, बट डू नॉट प्लीज डू नॉट स्पैम. I would love a double pivot of Neves and Frenkie at United. That sorts out Maguire के issues as well. सादिक भाई, that option वो नहीं है. वो नहीं ऑप्शन. Either one होगा. बहुत. सादिक भाई is very smart man. Big up है सादिक भाई. एक जाएगा बारसा, एक जाएगा अपना यूनाइटेड, एक रहेगा बारसा में. I think that is the only thing, right? But yes, I am seeing सादिक भाई ने कुछ भेजा भी है मुझे साथ में. चलो. Decent player, nothing special, but someone that can make a team work. Exactly. So he is not ready to be a first team player. ये मेरा भी ओपिनियन था सादिक भाई. मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा इसका स्काउटिंग रिपोर्ट शेयर करने के लिए. सादिक भाई, बिग अप एवरीवन. सादिक भाई ओपी हो जाए एंड साथ में लाइक भी कर दीजिए स्ट्रीम यार. लाइक करना मत भूलना. यस, वी हैव अ लॉट मोर न्यूज टू कवर, बट लेट मी ट्राई एंड बेसिकली see if I can share this with you all as well. So Ibrahim Sangare from PSV, Ivory Coast international, CDM, very good player, but for Eredivisie, he is not proven at the highest level. That's the main problem. इसलिए मैं बोल रहा हूँ he should be a backup squad player, and वो fit हो जाए in course of time, that'll be brilliant for any squad. So yeah, even for Liverpool, he'll be a backup. Fabinho starts anyway. So not a bad option as a backup. Chelsea के लिए, but we need a starter. That's the difference. We need a starter DM. He's not a starter for me.
इसीलिए मैं बोल रहा था इब्राहिम संगारे probably मैं okay रहूंगा, I will not be that happy. So this is what it is. I don't know if you guys can see it. सादिक भाई थैंक यू. 24 years Ivory Coast international, PSV Eindhoven से है, remaining contract 3 years, 16 million euros है. So probably with the Chelsea tax, with basically the Liverpool tax and the English tax, it cost about 20-25 million euros. ठीक है, with basically bidding as well. Very good in passing, good in possession, creativity above average, attack above average, defense, which is main being a DM, good. Intangibles, relatively young, a very good defensive midfielder who does the basics well. Attacking game could get better. Potential for big move is there this summer. Interesting. Sadi bhai, thank you. लेकिन again आप बोलिए भाई, लिवरपूल फैंस अगर है तो would you like to see a Sangare? I think लिवरपूल में better fit होंगे because he can be a good backup. लेकिन चेल्सी में we need a starter absolutely. रेनाटो सांचेज यार, ये हो रहा है एसी मिलान के साथ बात, बिकॉज अगेन I think to replace Frenkie, you need someone who would guarantee you 30 league starts. Renato Sanchez doesn't do that. Problem है वही है, ठीक है. लेकिन could Tuchel make Harry Maguire play? Why not? लेकिन problem है कि I don't see him doing well in four of the back system as much after he's lost the confidence. So that's a problem, and I want my team to be more flexible. देवांश, वही मेरा पॉइंट है एब्सोल्युटली. लेकिन भाई मैं देखते अभी कितने लाइक्स हो गए, और मैं यहाँ साथ साथ में इंग्लैंड वाला मैच का भी लाइनअप शेयर करने वाला हूँ, एंड विल कम बैक टू ट्रांसफर्स इन फ्यू मिनट्स, बट लेट मी सी कितने लाइक्स हुए. आई एम होपिंग यार वी हैव गॉटन टू एटलीस्ट 150 लाइक्स. कम ऑन, वी हैड अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग. कम ऑन, 104 लाइक्स हुए. लेट्स गेट right now in the next 5 minutes to 150 likes. Ideally 200 likes हो जाए, because 200 votes आए. So easily we can get to 200 likes. Come on, let's get there. लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड का गेम का लाइनअप क्विकली देख लेते हैं. What they're playing, whom they're resting, whom they're not. Again, put in your predictions, people. What do you think about Hungary versus England? It is the Nations League. It's the last group जहाँ पर मैचेस शुरू नहीं हुए in League A. So it'll be interesting. Or people who do not know what Nations League is, we have done a numerous set of watch alongs, और हर एक watch along में मैंने explain किया है. So I'm not going to repeat that. लेकिन this is what it is. Trent playing, Walker playing, Cody, Maguire, James Justin, Rice, Bellingham, Bowen, Mount and Kane. भाई Mount को इतना क्या खिलाते हो यार? I understand he's a super player, लेकिन overplaying, and that's why he gets, मतलब वो he loses his basically that, you know, that X factor यार. By the time he comes back to Chelsea, थोड़ा सा रेस्ट करा दो भाई उसको, क्या होगा, मतलब क्या होगा. But again, Hungary के लिए there are, I think this guy is interesting. This guy is linked to many clubs, by the way. Slazai, he was linked to Chelsea. आपको याद है तो in the January window, there are काफी अच्छे प्लेयर्स है हंगरी में, और हम देखे थे यार यूरोज में. इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो सेम ग्रुप में थे क्या? इंग्लैंड, आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन हाँ जर्मनी वाले ग्रुप में डेफिनेटली थे. आई डोंट नो इफ इंग्लैंड वाज इन द सेम ग्रुप इन द यूरोज. लेकिन यू सी द बेंच, बुकायो साका, Jack Grealish, Raheem Sterling, Tammy Abraham, Conor Gallagher, James Ward-Prowse. I was expecting Conor Gallagher to start आज, लेकिन it's okay, big deal. Calvin Phillips जो लिंक हुए, Calvin Phillips की बात ही कर लेते हैं. But anyway, put in your predictions. Hungary versus England और Italy Germany, याद रखना 12 बजे on Almighty Sports Plus, which is our second channel. It's tagged below, first line of description. So just go and press the subscribe button or bell notification icon. What about Calvin Phillips, people? Calvin Phillips क्या लग रहा है? और यस, मैंने काफी कमेंट्स नहीं लिए, बिकॉज लाइक आई सेड आई एम टॉकिंग अ लॉट. इतने सारे कमेंट्स है. इफ यू वांट टू प्रायोरिटाइज, देयर इज अ वे टू प्रायोरिटाइज, बट आई विल ट्राई एंड मार्क देम एंड टेक इट लेटर इफ पॉसिबल. लेकिन हाँ, कैल्विन फिलिप्स टू मैनचेस्टर सिटी, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा ये. यस, यू हर्ड इट हियर, बिकॉज फ्रेंकी डियोंग नहीं होने वाला, जो बहुत स्ट्रांगली लिंक था. But the fact that Manchester United are so badly wanting him, वहाँ टेन हाग फैक्टर है, इसलिए वो ज्यादा लाइकली लग रहा है कंपेयर टू गोइंग टू पेप एंड मैन सिटी. प्लस वो शुरू नहीं करेंगे ऐसे भी. आई नो कैल्विन फिलिप्स वुड वांट टू स्टार्ट, लेकिन भाई आप चैंपियनशिप में पोटेंशियली चैंपियनशिप में होंगे नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दे विल नॉट प्रॉब्ली स्टे अनदर ईयर. दैट्स माय ओपिनियन. लेकिन कैल्विन फिलिप्स माइट जस्ट मूव टू मैन सिटी, जो रोटेट करती है प्लेयर्स ज्यादा. So I can see Calvin Phillips moving, and that I'm saying between Mighty and So-So, you know, almost Mighty मैं बोल रहा हूँ, absolutely. Yes, Bowen starts is good news, Banav, absolutely. 2-1 England, Mount scores brace. Wow, that'll be interesting. TA number 7 jersey tonight. Okay. यार लेकिन again TA I was expecting कि midfield में खेलेंगे. I don't know if I might be wrong. Let's see on pitch क्या होता है.
have 200 million for signing. भाई रियल मैड्रिड को क्या चाहिए, इतना चाहिए? I don't think they need it. All they need is a backup CDM, a long term CDM. They need a backup right back. They need a starter right winger. That's what, मतलब ये, I correct me if I'm wrong, मिराज correct me, 3 प्लेयर्स ही चाहिए आपको प्रॉपरली, मैं सच में बोलूँ तो. I don't think, हाँ बैकअप गोलकीपर आप बोल सकते हो, और जो ऑलरेडी होने वाले हैं, I think from Chicago Fire, you know, that is mighty, almost almighty, I would say. Absolutely. How tough is Lewa to Barca due to current financial situation in the club? So Lewandowski, from Fabrizio's tweet and Fabrizio's video, ऐसा लग रहा है कि Lewandowski will most probably move to Barca. ठीक है, मैं बोलता हूँ mighty to Barca, लेकिन अगर नहीं जाते तो he might just end up 1% chance है end up at Bayern Munich. And then probably it'll be interesting if Gnabry might be moving quicker than expected, because Sadio Mane to Bayern भी लग रहा है mighty. ग्लोरी टॉटनहम हॉटस्पर, ये क्या हो गया, सिटी अब क्यों बोल रहे हैं? तो लेवा इज ग्रेटर देन लुकाकू. एब्सोल्युटली भाई, एब्सोल्युटली भाई. इफ बार्सा कांट गेट लेवा, हु डू यू थिंक इज द बैकअप? नो, एज पर द रिपोर्ट द बैकअप इज डार्विन नूनेज, और दे विल कंटिन्यू विद ओबामयांग एज अ स्टार्टर, और रोटेट बिटवीन द टू, वो ही होगा. आई डोंट थिंक दे पैनिक बटन हिट करने की जरूरत नहीं है. यू नो, चेल्सी मे नीड टू, बिकॉज आई डोंट सी, अगर लुकाको छोड़ते हैं, दैट हैवर्ट्स विल प्ले 30 गेम्स इन द लीग एज अ स्टार्टर. मुझे नहीं लगता. मे बी 20-25 गेम्स एट बेस्ट. 30-35 गेम्स हमें जो चाहिए वो हमें स्टार्टर चाहिए. ब्रोहा मे बी 10 गेम्स एट बेस्ट. मतलब आई एम सीइंग, यू नो, वी नीडिंग अ स्ट्राइकर इफ लुकाको छोड़ते हैं टू इंटर मिलान. Man United are desperate for De Jong for 2 reasons. One, he's the best midfielder available. Is he the best midfielder available? Yeah, arguably, absolutely. Ten Hag can persuade him too. He would be the statement signing for United also, short seller, which is a Glazer thing, absolutely. Well, yeah, I think the Ten Hag connection is the main reason. Let's be honest about it. Along with obviously him as a player generally, who's very, very good. But they technically are getting a new signing, and Donny might be coming back. But again, he's not your Frenkie De Jong. So fair enough. आई वॉज थिंकिंग यार टीलेमंस टू यूनाइटेड हो जाएगा, लेकिन टीलेमंस अगर आर्सेनल नहीं जा रही, यूनाइटेड नहीं जा रहा, तो जा रहे कहाँ है भाई टीलेमंस? आप बोलिए, वेयर शुड टीलेमंस गो? वेयर शुड रूबन नेवेस गो? बार्सा और यूनाइटेड, और टीलेमंस आर्सेनल और सम अदर टीम? लेट मी नो. Let's see. I didn't think Tuchel was a Tuchel signing. I think he was convinced by the club that he is the best fit. Tuchel wanted Haaland, and the second choice was Kalasic from Stuttgart, 6'4" young striker. Reports either, Sumit, like how much would you believe those reports? I wouldn't, if you really ask me. I can't believe that Tuchel preferred Kalasic over Lukaku. Let's be honest. I know that Vlahovic बहुत अच्छा किए थे last season में. He was supposed to be the next big thing, and वो हुआ भी almost for Juventus, and it looks like it will be eventually. लेकिन at the same time, you know, by the way, मैं साथ में मैच भी ऑन कर रहा हूँ just so that I don't miss it, क्योंकि मैच शुरू होने वाला है हंगरी इंग्लैंड, I think in a minute. लेकिन हाँ, it'll be interesting what happens in the match. Again, I feel that it is kind of over proportion. Lukaku, I think मैंने सुना था भाई Tuchel को काफी खुश थे. Come on, let's be honest. Even let's not go back and change. हम as Chelsea fans, I was very happy with Lukaku. I'm not saying two ways. Most of the Chelsea fans were. भाई ये मैच आ नहीं रहेगा टीवी में? Are you serious? ये क्या यार, इंडियन स्पोर्ट्स चैनल्स, I can't believe it. चलो सोनी 10-1 में न्यूजीलैंड इंग्लैंड आ रहा है, फेयर इनफ. सोनी 10-2 में क्या आ रहा है भाई? रोलैंड गैरोस आ रहा है, चलो फेयर इनफ. सोनी 10-3 में भी रोलैंड गैरोस आ रहा है, बट इन डिफरेंट लैंग्वेज, सेम चीज. सोनी 6 में भी ये क्या है भाई, क्या आ रहा है? मतलब व्हाट इज दिस मैन? मतलब पीपल थिंक दैट पीपल लाइक टू वॉच ऑन इंटरनेट ऑल द टाइम और व्हाट? कम ऑन, इट्स नॉट फेयर मैन. इतने सारे चैनल्स है, बट आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड विद इंडियन, यू नो, नेटवर्क मैन. आई रियली एम. मतलब कौन ये प्लान करता है, भगवान जाने. Andre Berta, Lelo, he has an eye for talent. He is like Marina with balls. Mourinho to PSG, what do you think? नहीं होने वाला, इस summer तो नहीं होने वाला. भाई Barca can't get Lewa, who do you think? But again, some funny things have happened. That's my gut feeling. Bro, any chance of Anthony to United? Yeah, football era. Thanks for joining. By the way, I hope you're liked and subscribed to the stream and the channel respectively, and to Almighty Sports Plus, because we are doing watch-alongs of the Nations League midnight matches. ठीक है, लेकिन एंटनी टू यूनाइटेड अभी सडन से थोड़ा कम हो गया है, बिकॉज एंकुकू टू यूनाइटेड बढ़ गया है, और फोकस डियोंग में है. पाउ टोरेस और एंटनी अभी बाकी है. 2 अदर पोजीशंस इट्स स्टिल लेफ्ट. सो दैट इज द की हियर. एक्चुअली ना, ये रिपोर्ट्स आए थे देयर विल बी अ स्वैप. अगर ये स्वैप करते हैं
तो आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली नॉट डन. आप इमेजिन करो 98 मिलियन स्ट्राइकर वर्सेस अ 48 मिलियन स्ट्राइकर प्लस 34-year-old old versus a 29-year-old plus basically a guy who has not been performing at all, a guy who's been performing at world class level. So it doesn't make sense. Lekin again, if they are happy with Lukaku, so be it. I don't mind that. I will bite their hands off. I'll take it. It's okay. थोड़ा loss होगा, but that's fair enough. वही खाली लेवेंडोव्स्की के लिए मैं करूंगा और किसी के लिए भी नहीं. यार कोई और बताइए और कोई. हाँ, by the way, we were actually linked with the Canadian striker, obviously, the one who plays for Lille. He had a kind of a season that आप बोल सकते हो, which was like wow, what a season, at least internationally, right? As in, this is the guy that I'm talking about. उसका यार नाम क्या है, मैं तो नाम ही भूल रहा हूँ आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है. But anyway, so I think what's his name? Yeah, I forgot his name. I cannot believe it, being a Canadian kind of supporter as well. मैं भूल गया उसका नाम. Jonathan David. Jonathan David. ठीक है, तो Jonathan David problem ये है ना, he's not had some great months in the last 3 or maybe 2 months. तो मैं थोड़ा सा इफी हूँ वहां पर. I rather have someone proven at the international stage ज़्यादा. I know, well, we should scout more and all those things. यार लेट हो गया. We may not be able to do that right now. बिस्मा टू चेल्सी ज्यादा लिंक्स आ रहे, ज्यादा रिपोर्टर्स बोल रहे हैं उसके बारे में, बिकॉज राइस टू चेल्सी थोड़ा ठंडा पड़ गया इस हफ्ते में. एब्सोल्युटली आई वांट नेमार इन चेल्सी. नितेश, I also want him. I don't know why there are people out there who think that, again, nothing against anyone, लेकिन I know that a lot of people think that they're experts, including myself. लेकिन हाँ, Neymar will not fit at Chelsea. Are you for sure? Are you for sure saying that Neymar will not fit at Chelsea? Come on, man. I'll bite your hand off अगर Neymar मिल रहा है. But again, at what cost? That's the problem. It's not my money. It is not my money. It is not my money. और Chelsea का clean slate है, so why not? Why not? Madrid right now from available ones, ठीक है. So problem है ना Madrid में a backup striker. मैं again I'll go back to saying that if Hazard can stay fit, I know I'm going back to the same thing. लेकिन if Hazard can stay fit, he can be your backup striker. I really believe that. वो रह सकता है. He is that experienced to play the striker role very well. उसने किया है for a season at Chelsea. उसने किया है काफी बार. कॉन्टे का जो second season था, Hazard played a lot of games as a striker. Trust me on that, and played pretty well. But he has to be fit, of course. That's the big if. हाँ, लेकिन what are your other options? Maybe you'll have to go for a young gun. मुझे नहीं लगता कोई आएगा क्योंकि clearly Benzema is starting, just like Tottenham का problem है with Harry Kane. But Tottenham का देख लेते हैं यार. मतलब I know काफी comments है, but I'll try and come back to them. Tottenham में they are doing a madness. How would you rate Tottenham's transfer window अभी तक? Brilliant, man. Ivan Perisic already linked to Bastoni very strongly. हाँ, Dybala Tottenham links आ रहे थे last 72 hours में, लेकिन again I believe Inter Milan ही favorite अभी Dybala के लिए. तो I think Dybala to Inter Milan looks more likely, more mighty than him going to Tottenham. लेकिन Tottenham might get Bastoni, quite possible है, क्योंकि why? इंटर ने किया है अग्री विद चेल्सी लिंक्ड डिफेंडर ऑफ टोरिनो ब्रेमर, ग्लेसन ब्रेमर, जिसको मैंने उसका सादिक भाई ने स्काउट किया था साथ में. सादिक भाई ने शेयर किया था. मैंने एक्चुअली काइंड ऑफ शेयर मोर व्यूज अबाउट हिज जस्ट हिज टोरिनो एक्सपीरियंस. आई फील दैट ब्रेमर एट इंटर मिलान इज अ ग्रेट मूव फॉर हिम एंड इंटर एज वेल. ठीक है. और बास्तोनी प्रॉब्लम वो ये लेफ्ट साइडेड है, लेकिन टॉटनम नीड एन अपग्रेड ओवर डेविस एंड दैट्स व्हाई वो बास्तोनी ले आएंगे मेरे ख्याल. दैट लुक्स माइटी, so that will be brilliant. Kostic, but do they need a Philip Kostic? Come on, they already got Ivan Perisic, जो चेल्सी भी ट्राई कर रही थी. Come on, you got it, great signing. तो मुझे नहीं लगता Philip Kostic is needed. Philip Kostic to Chelsea would be brilliant, लेकिन absolutely Philip Kostic जो है स्टार्ट करना चाहेंगे, बेन चिलवेल स्टार्ट करना चाहेंगे, वही प्रॉब्लम है. तो इसीलिए फिलिप कॉस्टिच माइट नॉट गो टू ईदर ऑफ द क्लब्स. यार मैंने हर्षित काफी बात किया इसके बारे में, तो डू वॉच द स्ट्रीम अगेन. हम काफी अदर प्लेयर्स और क्लब्स के बारे में बात करेंगे. थैंक यू ओम. एब्सोल्युटली द पोर्चुगीज प्रेस confirms that Sergio Conceição is the PSG shortlist to replace Mauricio Pochettino. Okay, interesting. We should try to buy black midfielders. No one can match their intensity. I would not say so, but I get your point absolutely. Or by the way, it's a Chelsea thing as well. No? Chelsea thing as well. We've had some great ones. If you actually see, again, no discrimination, but what I'm trying to say and what Akash is trying to say is like Makelele. We had Essien, we had John Obi Mikel. We had Ramirez.
We had Kante, great. So there is a point that Akash is trying to make. Absolutely. वेरी बैड मैन व्हाट कैसे यार कैसे यार आई थिंक कॉर्नेलियो का लास्ट रात को मतलब व्हाट वाज दैट मैन सलीबा स्लीपिंग मैन वेरी बैड डिफेंडिंग आई नो इट्स जस्ट वन प्ले बट एनीवे दैट शोज मी या जॉनसन डेविड थैंक यू Osimhen problem is just like Jonathan David after the injury that he had ना सो आर्सेनल के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे बाय द वे और टॉक अबाउट ऑसीमैन यार नेपोली के साथ डील नहीं करना भाई कोलिबाली मे बी दे वुड लाइक टू गेट सम मनी आफ्टर फाइनली तो इसलिए वो लोग रेडी है थोड़ा सा टू नेगोशिएट आई बिलीव लेकिन ऑसीमैन के लिए वो लोग बहुत मांगेंगे यार नेपोली बहुत ही डिफिकल्ट है भाई डील करने के लिए सच में टीलेमंस इज अ परफेक्ट लिवरपूल प्लेयर इंटरेस्टिंग सोनी लिव पे आ रहा है अरे भाई लेकिन टीवी पे क्यों नहीं आ रहा है मेरा तन में यह क्वेश्चन है मेरे पास 15 स्पोर्ट्स चैनल्स है ठीक है मैं क्या अचार डालू क्या 15 स्पोर्ट्स चैनल्स का यार भाई कोई सुन रहा है क्या इट्स नॉट नथिंग अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर नेटवर्क इट्स अगेंस्ट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग इन स्पोर्ट्स लाइक व्हाट इज योर प्रॉब्लम मैन ऐसा मतलब आई अंडरस्टैंड रोलैंड गैरोस बहुत लोग देखते हैं आई टोटली रिस्पेक्ट दैट लेकिन मैं 15 चैनल्स है डोंट टेल मी दैट नेशंस लीग एंड इंग्लैंड का मैच नहीं आ रहा है भाई आई एम रियली शॉक्ड even India के मैचेस भाई मतलब that's the thing prime channels they don't want to kind of support that I don't know for whatever reason मतलब आप वही रखो आप क्लब फुटबॉल तक ही रखो सीमित आप वही रखो वही सेम चैंपियंस लीग दिखाते रहो ईयर आफ्टर ईयर वहीं घिसते रहो ओके हाउ विल इंडियन फुटबॉल हाउ विल द पीपल ऑफ इंडिया लर्न मतलब मैं कहीं कुछ पढ़ा नहीं हूँ फुटबॉल हाउ हैव आई लर्नड आई हैव लर्नड फुटबॉल बाय वाचिंग फुटबॉल फ्रॉम 20+ years सिंपली पुट वो बॉटम लाइन है and these guys are not allowing it to happen I was kind of lucky बीच में 7 साल के लिए मैं बाहर था and I had more access लेकिन फिर भी भाई मतलब I just like too much man और मुझे याद है मैं कैसे ढूंढ के VPN से देखा हो यार इतने साल तक come on man that सब लोग के लिए पॉसिबल नहीं है वो not fair absolutely लाइनअप रिव्यू कर लो इंग्लैंड हंगरी यार मैंने करा था एक्चुअली क्विकली मैं किया था I just showed the lineups and I gave my comments about who's starting and who's the bench but कोई नहीं है thanks Serie A club more interested in exchanging players between themselves I think it's a thing of Serie A it's not only players but even managers remember managers भी काफी होते हैं and I'm kind of surprised जो होता है मतलब it's not like बहुत सारे Serie A clubs है जो बहुत powerful है but they kind of do it I don't know why that happens but it happens maybe वही है जो टैक्स नहीं लगता ना एक्स्ट्रा तो it kind of helps them टुकल फ्लूइड फुटबॉल खिलाना चाहता है प्लेयर्स अपना पोजीशन इंटरचेंज करे और कॉन्स्टेंटली प्रेस करे बट लुकाकू को बीच में रह के खेलना है फेयर इनफ बार्सिलोना विनिंग नेक्स्ट चैंपियंस लीग ऑल द बेस्ट दे हैव गुड लाइनअप दे नीड अ गुड ट्रांसफर विंडो उसके लिए इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूंगा आसिफ बट डिफिकल्ट एट दिस पॉइंट सच में बोलूं तो लाइनअप रिव्यूज इंग्लैंड वर्सेस हंगरी तो आप लोग सब लेट ज्वाइन किए हो मुझे लग रहा है मैंने ऑलरेडी कर चुका है लेकिन हाँ द फैक्ट इज ट्रेंट इज नॉट प्लेइंग इन मिडफील्ड वो थोड़ा सरप्राइजिंग है मुझे लग रहा था इट विल बी अ ग्रेट चांस फॉर हिम टू बी एक्सपेरिमेंटेड इन मिडफील्ड वो इज द ओनली थिंग आई वुड कमेंट और ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी दैट राइस इज प्लेइंग नॉट सो हैप्पी दैट माउंट इज प्लेइंग इतना गेम्स बट अगेन होपफुली ही हैज गुड परफॉर्मेंस मैग्वायर एट सेंटर हाफ थोड़ा सा है सरप्राइजिंग वेरी ऑनेस्टली लेकिन हम जानते हैं भाई साउथगेट पिक करने वाले इन 3 द बैक सिस्टम वेरी हैप्पी दैट बावन इज फाइनली स्टार्टिंग फॉर इंग्लैंड ब्रिलियंट दैट लेकिन हाँ हंगरी में काफी अच्छे प्लेयर्स भी है देयर आर कपल ऑफ गुड प्लेयर्स हम देखते हैं बुंडेसलीगा they do quite well so yes absolutely looking forward to even see people from the bench and I was actually hoping and that Reece James will start but नहीं चलो कोई नहीं hello Amrit hello absolutely भाई I 100% agree man Daniel Levy and this guy बहुत ही बड़े और डीएल कुछ कॉम्बिनेशन डैनियल लेवी सम कॉम्बिनेशन है यहाँ पर ओके व्हाट डू यू थिंक हु डू यू थिंक इज अ मेजर हैंड इन कूलिबाली ट्रांसफर नापोली भाई नापोली इट्स अप टू नापोली सिंपली पुट भाई वाज देयर पावर कट इन योर एरिया हियर इन या एब्सोल्युटली भाई बारिश हो रही है पागलों जैसे बाहर बैंगलोर में हाउ विल यू रेट माने टू बायर्न I would rate Mane to Bayern as mighty. I wouldn't say almighty. The reason being क्योंकि उनके पास already है मतलब on paper at least as of now they have Gnabry, they have Leroy Sané, they have Coman. So I think Mane आकर maybe they will he'll take off minutes from them. और इसलिए Gnabry has been linked out. और how good is he as a striker? अगर वो striker जैसा सोच रहे
मेरे ख्याल से इतना कन्विंस नहीं किया माने ने एज अ स्ट्राइकर, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ माइटी। नहीं यार, मुझे नहीं लगता, ही डजंट हैव द लेग्स, यू नीड द लेग्स फॉर सीडीएम, लाइक कम ऑन। जॉर्जिनियो का एग्जांपल लेता हूँ, डू यू थिंक जॉर्जिनियो वर्क्स एज अ प्योर सीडीएम? आई डोंट थिंक सो। द स्मार्ट बिजनेस ऑफ बायर्न इज नॉट गेटिंग मच प्रेज, दे गॉट बिग प्रेज। ये बात ही करना है यार, बायर्न के बारे में कर लेते हैं बात, चलो भाई। क्या बायर्न म्यूनिख क्या खिलाते हैं भाई? ऑपोजिशन क्लब्स के जो डायरेक्टर्स हैं उनको क्या खिलाते हैं? व्हाट डू दे एक्चुअली मेक देम ईट और ड्रिंक? ट्रस्ट मी ऑन दैट। रायन ग्रावेनबर्ग, मैं बोल के थक गया हूं। आई डोंट नो पीपल हु वॉच माय चैनल फॉर 1 ईयर, बोथ द चैनल्स। रायन ग्रावेनबर्ग हमने इतना स्काउट किया था, इतना स्काउट किया था, बोल रहा था कि यार इफ चेल्सी गो 4-3-3 और वी प्ले डबल पिवट, ही इज अ प्लेयर हु कैन डू बोथ द थिंग्स। लेकिन नहीं, यंग प्लेयर है। आफ्टर क्लैरेंस सेडॉफ, ही वाज द गाय टू रीच दैट लेवल जो नंबर्स है इन एरिडिविजी, और दैट सेज अ लॉट। क्लैरेंस सेडॉफ इज प्रॉब्ली वन ऑफ द गोट्स ऑफ डच फुटबॉल। ठीक है, देयर इज मोर टू इट। आई नो जस्ट 20 years old, यू शुडंट बी जजिंग इतना, लेकिन भाई उसने किया है भाई, उसने किया है। He has won the league back to back. Come on, this guy knows a lot. Or him at 19.5 million plus 5 million euros add-ons. Mazraoui, how do they do it? How do they do it? I have no idea, man. How do they do it? पता नहीं Bayern, मतलब ऐसा क्यों यार? Bayern are one of the top clubs of the world. Surely they have a lot of money. Surely. मतलब इतना बेसिकली जर्सी सेल करते होंगे, दे हैव इतना बेसिकली पॉपुलैरिटी। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट मैन, कैसे करते हैं? और यही चीज अगर इंग्लैंड में आते प्लेयर्स, वो 20 मिलियन होता, 45 मिलियन, मैं लिख कर बोलता हूँ 50 मिलियन होता, मैं तो बोलता 2.5 टाइम्स। एब्सोल्युटली नॉट डन भाई, एब्सोल्युटली नॉट डन, बट आई एम जेलस ऑफ बायर्न, आई हैव टू से। बट यार है यार, उनके पास नैक है। मैड्रिड साइनिंग स्टर्लिंग, ये लोग गोइंग टू बायर्न, एंड ग्नाब्री साइनिंग फॉर सिटी। नहीं यार, मुझे लग रहा है ग्नाब्री रियल मैड्रिड जाएंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। दैट्स व्हाट आई एम कॉलिंग, जस्ट माय ओपिनियन। स्टर्लिंग विल बी द की थिंग, लाइक स्टर्लिंग माइट बिंग अ डोमिनो विद राफेल लियाओ, थिंग्स लाइक दैट। हो सकता है वो इटली जाए विद एसी मिलान, जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। और स्टर्लिंग अभी भी चेल्सी में भी लिंक्ड है, बाय द वे। आज भी मैंने देखा एक रिपोर्ट, स्टर्लिंग टू चेल्सी, अभी भी चेल्सी कैंप आर इंटरेस्टेड। I know he doesn't fit the Chelsea DNA really, लेकिन he is an upgrade in terms of quality. I will not deny that. भाई मैं खुद हैरान था, इतना फिजिकल एंड क्रिएटिव बोथ, और इतना ज्यादा मेच्योरिटी इस उम्र में। भाई क्या मिडफील्डर है ग्रावेनबर्ग। और यस यार, हाईली अंडररेटेड आई वुड से। मतलब मैं तो बोला था ग्रावेनबर्ग, वाइनाल्डम, भाई मतलब बर्गर्स जो कल रात को किए थे परफॉर्म, डच मिडफील्ड इज एक्चुअली लुकिंग गुड ऑन पेपर, राइट? इंग्लैंड की किसी टीम से 65 मिलियन मांगा था ग्रावेनबर्ग के लिए, देखो यही है। मतलब why this discrimination, man? Why? Again, I'm not an Englishman, I'm just saying, I've noticed it. Giving Conte a budget of 150 million, does that make a possibility for Spurs to give a tough fight? हाँ, तो निपुण मैंने प्रेडिक्ट किया है ना कि अभी as things stand, Spurs might just overtake Chelsea in this league, in this season's league, right? लेकिन it all depends on the transfers. I feel अगर 200 million सच है चेल्सी का, प्लस अगर टॉमस टुकल थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाए, तो आई वुड से दैट चेल्सी विल स्टिल ओवरटेक स्पर्स। लेकिन आई थिंक वही है बिटवीन चेल्सी एंड स्पर्स, वो है। यस आई डू, थैंक यू। व्हाई चेल्सी इज नॉट गोइंग फॉर ग्नाब्री? पता नहीं भाई, मतलब वन थिंग इज मे बी दे आर गोइंग, चेल्सी बिलीव इन गोइंग बिहाइंड द सीन्स। आई और एक होता है ना टुकल आई थिंक काइंड ऑफ नोज इंकुकू, सो ही इज गोइंग विद इंकुकू, डेम्बेले, नेमार, तीनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो ही नोज। स्टर्लिंग इज सीन इन द प्रीमियर लीग। So these are 4 wide wingers that we have been linked very strongly in the last month. Gnabry, I don't know why we are not. Maybe he's played for Arsenal, that's why आप बोलोगे आर्सेनल लिंक हुई है। पता नहीं कौन से सपने में देखा यार आर्सेनल, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन वही है, नहीं जाने वाले आर्सेनल, वो तो वीक है डेफिनेटली। Definitely I see him more towards Real Madrid, or of course let's be honest, in the last 12 months Real Madrid has again come up the ranks, or Real Madrid the history they have, you will be tempted with Real Madrid, और उनको राइट विंगर स्टार्टर चाहिए arguably. और यार दैट इज द डेडिकेशन, शायद मींस अ लॉट मैन, मींस अ लॉट। और या लाइक कर दीजिए, भूलना मत। यस, हमने काफी सारा डिस्कस किया है स्ट्रीम में, काफी सारा। और मैं 10 बजे से पहले मैं वाइंड अप करने वाला हूँ, बिकॉज वी आर हैविंग अनदर लाइव एट 12 बजे, शार्प 12 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वी आर लाइव, एंड दैट इज ऑफ कोर्स फॉर द वॉच अलोंग, दैट्स गोइंग टू बी इटली एंड जर्मनी का ब्रिलियंट गेम फॉर मी। 119 likes, come on people, let's get to 250 likes, आराम से डबल हो सकता है। 120 का 240 कर दीजिए, just the press of a button, just like,
press the like. Do not forget to vote. लेकिन मैं देख रहा हूँ काफी सारे votes है, likes कम है. So let's get the likes, and hopefully we get to 3.8k kind of in terms of the subscriptions on this channel. But not just that, we definitely need to get to the other channel. That's Almighty Sports Plus. We are very close to 3k, so it'll mean a lot if you guys can get us there as well. Let me know if you are able to. But hopefully, again, I am going to be sharing. ये अपना like target है और subscribe target है. आप देखिए. Let's get there. Will mean a lot absolutely. यहाँ पर यार मैं कुछ और न्यूज कर देता हूँ, दे देता हूँ for people who might have missed the watch alongs during the week. तो quickly मैं देने वाला हूँ यहाँ पर before I take more comments. हाँ, आपको अगर प्रायोरिटाइज करना है कमेंट्स, यू कैन ऑलवेज सुपर चैट अगर आप अफोर्ड कर सके हो, नहीं तो प्लीज वेट. लेट्स सी. बिग अप टू वान माटा, ही लीव्स मैन यूनाइटेड. वेयर इज ही गोइंग? बिग क्वेश्चन. लिंगार्ड मेरे ख्याल से ही गॉट अ रॉ डील इन द रैगनिक, जो बहुत अच्छा किए ऑस्ट्रिया के साथ लास्ट नाइट, रैगनिक दैट इज अगेंस्ट क्रोएशिया. But yeah, Lingard, I think he could have been fitted in the Ragnick system. Again, are we too late? He went off. Pogba to Juventus looks very likely. 8 million euros net per year plus add-ons offer कर रहे हैं as wages. Brilliant. तो मेरे ख्याल से वापस से रीमैरिज होने वाला है दूसरी बार for दूसरा club for Paul Pogba. That is something that I cannot even comment about. Rudiger, of course, announced by Real Madrid. Pains me to say it, like he's going to be a good player for Real Madrid for sure. आप बताइए who can you see moving out of the starting 11 because Rudiger is coming in. Disciglio, talking about Juventus, हमने पॉल पॉगबा के बारे में बात किया. Disciglio has signed an extension. Lacazette, Arsenal fans, what do you think? अच्छा, आपको पता है anyone out there? Lacazette निकल गया, he's gone to Lyon. ठीक है, he loves Arsenal. He was an Arsenal fan also, remember. He has gone back. पता नहीं है, बहुत सारे players are going back to their original club and they are going on a free. Lacazette going, Aubameyang already, obviously he left to Barca. You know who is the highest scorer in the squad of Arsenal right now? Highest goal scorer in the Premier League. Who is it? आप बोलिए. Let me know if anyone knows that answer. Who is the highest goal scorer in Arsenal squad right now as things stand after Lacazette leaving to Lyon back? Wow, Arsenal, big kind of chance. तो लगता है Arsenal have a replacement. Otherwise, why would they let him go? I'm kind of surprised. I know वो इतने अच्छे नहीं थे towards the end of the season, but यार still he was a natural goal scorer. I'm kind of surprised. सच में बोलता हूँ. Plus the leadership element वो miss करेंगे up front. Unless they are getting an Osimhen on the cheap, I don't know. Or Gabriel Jesus के they think that he's a number 9. That might be the thing. Let me know, people, what do you think? Or Lautaro, Martinez, one of the three. ये तीन है links Arsenal के साथ. लेकिन Aston Villa के transfers, I think someone was asking, big news for them. Diego Carlos, Jules Kounde's partner, is there in Aston Villa, signed for peanuts. I know 29 if I'm not wrong, but for Aston Villa, perfect level for him. He'll do really well. वो बहुत ही अच्छा signing. Of course, Boubacar Kamara भी किए थे, recently. So I think they are on a mission. Aston Villa are on a mission. और वो उतना ही नहीं. I think they have also signed Olsen, उनके backup goalkeeper from Roma, जो last season on loan थे, but at 3.5 million euros. So superb for Aston Villa, right? Absolutely superb. लेकिन let's talk about थोड़े managers. Gattuso, the AC Milan legend, is moved to Valencia as a head coach. Dirk Kuyt has moved to ADO Den Haag in Eredivisie as a head coach. George Jesus has moved to Fenerbahce. He was the guy जिसने transform किया था Matic का career, in my opinion. And talking about not a coach but a very senior player, Chiellini, after that loss to Italy in the Finalissima, has confirmed that he'll be possibly moving to Los Angeles. And talking about Italian football, AC Milan have got confirmed with new American owners. Redbird Capital, बहुत ही अच्छा होने वाला है takeover, and something that हमें पता है, they are related to Fenway Sports Group as well. So that is only good news for them. Brilliant news, I would say. And what about one guy जिसने मैं बात करना भूल गया, like this is about Julian Timber. What do you think? Timber to Man United. Does it look very likely? Would you prefer both Timber and Pau Torres? Any Man United fans? Or would you actually want Timber going by last night's performance? Let me know. मतलब मुझे लगता है Timber probably may not come because Ajax में इतने सारे लोग एक साथ नहीं छोड़ने वाले. So I feel that maybe Pau Torres might get tempted to Man United, and that might be good for Man United. That's my personal opinion. Let's see.
Sorry to say, but Germany were unlucky in 2018, hit bar twice against Mexico, won against Sweden, and again hit bar twice, and made loads of chances that could have been here and there against Korea. Fair enough. Or talking about that, we will be covering a lot of World Cup football, so stay tuned. Something interesting coming up. Um, कोई नहीं, big up to Eric Blue. Nice to have you, bro. How are you? Hopefully, I'll have you sometime as well. But how are you rating the Chelsea transfers that are being linked? Are you one person who still believes that Lukaku should just clear his mind and stay, or you should just say buzz off? What do you think about Lukaku, and what do you think about basically the centre backs being linked? Is Jules Koundé worth 60 million euros? Please let me know, Eric Blue. Do you think we should go for 30 million euros? Koulibaly instead. I think it's far better. Don't you think so? Is Ronaldo ready to play Europa League? He has actually. Yeah, this is also news from this week. रोनाल्डो ने बोला है कि he will be definitely be playing. He will be playing and he will be definitely be staying at United. और रिपोर्ट से कि 2 साल का एक्सटेंशन मिलने वाला है एंड वी ऑल नो 2 साल क्यों होता है, 1 साल खेलेगा उससे पहले मैन यूनाइटेड विल मेक सम मनी, सम ट्रांसफर फी ले लेगी. दैट्स व्हाट विल हैपन. दैट्स माय प्रेडिक्शन. Okay, the mods at Almighty Blues and Almighty Sports Plus are very nice and friendly, especially Matata United and Almighty Sports Plus. Thank you. Of course, and everyone I would say absolutely. And of course, if anyone wants to become a mod, let me know. If you're regular, I can try and make you a mod as well if you think that you can support the channel that way. But there are various ways of supporting, and every support that I get is really definitely thankful for that. Arsenal's Premier League season 2022-23 will be a transition season. They have been in transition just like a Manchester United over the years. वो सच्चाई है. लेकिन I think again expectations same रहेंगी. They are okay with a top 5-6 finish, and that's my real kind of say that about Arsenal. That's what they are okay with, and that's the problem. That's why the Kroenkes are not loved by the Arsenal fans. Their ambition is not as much. Just like Glaziers for Man United. Ajax Man United नहीं यार इतना realistically होने नहीं वाला. I think he won't play Europa League. Okay, interesting. I think he will. He will play. He likes to score goals. He'll play. I think he'll play. After watching France game yesterday, my dad was asking, "ये team जा रही है World Cup? जा रही है World Cup? The story will be same as Germany's story." यार, let's not judge on one performance, but I know what you're saying. Defense is looking weak. I think the formation जो है वो suit नहीं कर रहा. They should go for the back. Try and get on Giroud as a sub. Different factor definitely works. Are Chelsea re-signing Martin and Matic? No way. Come on. We're not doing that. But thanks for joining. I hope you're subscribed to the channel, and do not forget to press that like button, and do not forget to subscribe on Almighty Sports Plus as well. Absolutely, 80. I thought you were already, bro. As in, let me make you a mod. Certainly helps. Definitely. And 8744 is the channel as well, people. For those of you who may not know, please do consider subscribing to him. Really works hard and he knows his stuff. But absolutely big up to this. Mshare means a lot. Trust me, it means a lot. This gesture itself tells me a lot. And of course, you are always here. You're back. And we'll have some fun in the watch along as well at 12 o'clock. So don't worry about that. Big up to Mshare, always supporting the channel. And like I said, there are various ways of supporting the channel. You can be a mod. You can give super chats. You can just be here, put in comments. You can maybe retweet my stuff. You can like. There are various ways. अगर आपको अच्छा लगता है content, if you like me as a person, if you like me as a fan, if you relate to me, there are various ways of supporting. And of course, content creators, you're also welcome to the channel as panel. Various ways, right? Absolutely. What? 475 million? I don't think they need even 175 million, to be very honest about it. City and Liverpool are doing the same thing in Premier League. What Bayern does at Bundesliga, buying players for cheap. Sane, Luis Diaz. Again, other clubs are doing their job. Remember, whole of last summer, we hyped up Haaland like anything. Not that he was not supposed to be hyped. लेकिन पता है क्या बोल रहे हैं? City were like clever. हम Jack Grealish ले रहे 100 million में, और we'll probably wait for Haaland. ठीक है. Luis Diaz, Tottenham 3 महीने तक कर रही थी स्काउट, पूरा नेगोशिएट कर दी, फिर आई लिवरपूल ले ली as soon as the window opened. Julian Alvarez, very good scouting, great stuff. Ferran Torres, हाँ उसका थोड़ा सा है debatable, but again, you know what I mean. Nikhil in the house, thank you Nikhil. Players were literally tired after such a long season. Fair enough. Most interactive channel as of now. Oh man, that means a lot. Hope that it grows leaps and bounds. However, that would mean less engagement due to volume, but still. Not really. We'll try and grow the channel even in terms of the number of people who manage it. So I am ready to grow my team as well. So let me know if you guys are interested. Of course, I cannot promise anything right now.
क्योंकि we are at the very start. लेकिन again, any help would be great. But yes, I'll try and interact as much as possible because that is something that I believe in. I have found friends in you all as well, so I think that's a great way of interacting from my end as well. So again, big up to Sagar for this comment and everyone else. During the start of 2018 World Cup, he predicted Germany is the first big team to disappoint because of Ozil issues and Muller saga, and no one was listening to Lowe and Neuer. Okay, interesting. No problem, AD. Always welcome, bro. Benzema possible replacement shortlisted by club Raul D. Thomas. Yeah, कल आए थे by the way. कल दिखे थे ना, if I'm not wrong. Mayoral, हाँ, replacement तो नहीं लगता मुझे. There'll be backups. Let's be honest. Say Simon Kerr asking Ericsson to attack and Ericsson responding. क्या मतलब heart bad attempt अद्वै ये वाला. अरे Taron the house, Taron bro, big up bro. Taron, we have to do a stream together. People who do not know Taron, come on, you are living under a rock. If you actually follow the channel right from a year or more ago, Taron was the guy with whom I did my first live stream. I remember my first live stream was with Taron. No, not just that. Taron was probably the most frequent panel on the channel. I can safely say that. And pretty sure Taron will be back. And I've been working with Taron to kind of work out a date. Hopefully, we'll have a lot of content for the European audience again. But again, Taron, you know your stuff. A Chelsea fan proper. I have not seen a young Chelsea fan know so much as Taron knows. I have to say that. I can big up to Taron for sure. Taron, I'm planning. By the way, remember last Euros? I am planning something for the World Cup. So as of now, I've got a couple of ultras. We'll be talking about a little bit of history, a little bit of basically this World Cup, not to give too much away. But maybe if you see a couple of episodes in the coming weeks, do let me know if you'd be interested. Would love to have you on one of the weekends. अंकित भाई अभी न्यूज आ रहा है चेल्सी इज पुशिंग सीरियसली फॉर लेवा. यार सोर्स बताइए सौविक भाई. चेल्सी माइट गो बट वही है मेरा गट अभी भी बोलता है वीक है बिकॉज ही हिमसेल्फ एज पर Fabrizio Romano wants Barca or that's it. That's what I'm saying. That's the main problem. No problem. अच्छा तो यहाँ पर let's end the stream and before ending कुछ और मैंने मिस किया. By the way, Man United fans, आप बोलिए James Tarkowski. I think he is available. He is available on a free. Correct me if I'm wrong. अरे यार big up यार all the best. लेकिन हाँ जेम्स टारकाउस्की टू मैन यूनाइटेड अगर बाय चांस आपको पाउ टॉरेस नहीं मिलते हैं, टिम्बर नहीं मिलते, दैट इज द थर्ड ऑप्शन. मैं सुन रहा हूँ स्क्रीनियर. बाय द वे दे वर आल्सो गोइंग फॉर स्क्रीनियर एंटायर वीक. लेकिन मिलान स्क्रीनियर जो है इंटर मिलान के राइट सेंटर बैक, ही इज वन ऑफ द टॉप डिफेंडर्स ऑफ सीरिया फॉर मी. ठीक है. और मैंने बात किया था स्क्रीनियर हु इज आल्सो मिसिंग आउट ऑन वर्ल्ड कप, वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स टू मिस आउट ऑन द वर्ल्ड कप. स्क्रीनियर is extending. He's extending with Inter Milan. ठीक है. तो वो तो is not possible now. और कौन था by the way? और कौन था quickly? I think हमने चेल्सी का तो काफी बात कर लिए. Again आप बोलिए DM options कोई है, striker का options कोई है apart from the ones that we've spoken. I'm not sure if we have many other options apart from that, right? And who else? I think maybe I think yeah, I think I've covered most of it from what I remember. मैंने ज्यादातर कर लिया है. And where do you see actually Rafinha move now that his value has increased? Do you see a move? Maybe he'll just stick on in Leeds. Because Leeds might lose Calvin Phillips. They need one big player. I'm just saying. I know different players, but putting it out there. Maybe Lewa choose Chelsea if he gives up his Barcelona move. Cause maybe let's see. बहुत competition. I hope Tuchel can do some जादू. यार वो ये Chelsea को attempt करना चाहिए भाई. Attempt तो करिए. Try for Gnabry, try for Lewa. मतलब nothing against Barca fans. I'm just putting it up. यार आप टेम्प्ट तो करो. पाउ टॉरेस भाई मुझे जेन्युइनली लगता है कि यार चेल्सी कैन नेगोशिएट इन पाउ टॉरेस बिकॉज हम चैंपियंस लीग फुटबॉल दे रहे हैं यार उसको. जोजे सेंड मैसेज टू केन एज ही इज लिंक्ड टू पीएसजी कॉलिंग हिम देयर. Jose has just texted Adwe as well. Looks like Adwe, but I know what he's saying. Thank you. Did you make 2018 World Cup predictions? Do you mean this World Cup predictions? I don't know. Okay, I didn't have a channel back then. Let's put it that way. But of course, like I generally made is of course Chelsea and Barcelona in Champions League semi-final coming. Okay, that's a prediction. Talk about a prediction. DM लेना है तो अच्छा रेनाटो सांचेज कांटे रोल नहीं यार दोनों इंजरी प्रोन है. That's the main problem. But again यार 10 बज गए यहाँ पर.
आई एम लुकिंग एट कितने लाइक्स हुए। मैं मुझे पेज भी सेटअप करना है अभी भी, तो अभी डिनर करना है, पेज सेटअप करना है और वापस से आप लोग के साथ मिलना है 12 बजे on Almighty Sports Plus. Do not forget Almighty Sports Plus will mean a lot if everyone can join. 12 बजे शार्प इटली वर्सेस जर्मनी, बढ़िया मैच होगा। शायद फतेह भी ज्वाइन करेंगे, होपफुली। आई डोंट नो सादिक भाई इज फ्री, बट वील हैव वन ऑफ देम इवन टुमारो। लेकिन हाँ, आई एम सीइंग, कम ऑन, जस्ट 127 लाइक्स, वी कैन डेफिनेटली डू मोर लाइक्स। यार लाइक्स में कंजूसी मत करिए। अगेन, I know that super chats is totally optional. Likes मैं बोलता हूँ कर दीजिए, that's by default. Mods, come on, let's help get in more likes. I think hopefully we should get to 150 likes. ज़्यादा नहीं बोल रहा, 250 target था, 150 likes कर देते हैं before the stream ends, and that is the minimum target. Come on, for the next stream as well, जो शुरू होने वाला है 12 बजे on Almighty Sports Plus. What's been the best Chelsea game last season? It has to be the Juventus game, man. It has to be the Juventus game. Let's be honest about it. Where we won, not the one we lost. What are the chances of Dembele joining Chelsea? मैंने बोला है mighty, but again, if counter offer आता है, if Barca are not getting any other signings, they might convince and come with a counter offer. चलो यार, बहुत सारे कमेंट्स हो गए, मुझे सेटअप भी करना है, मुझे डिनर भी करना है, एंड आई एम होपिंग द लाइक्स हैव गॉन अप. But yes, big up to everyone who's joined, and big up for the super chat, Mshai, and every mod out here. Like always, like I say, it's your channel, of course, and let's get the like up. जो भी नहीं किया, please let's get the likes up. Like दबा दो, और we will be back at 12 बजे. Do check out Almighty Sports Plus and also Football versus Cancer. Big up to Talk MU, brother, and yes, absolutely. Yeah, fair enough, Adve. Good choice that as well. But yes, मिलते हैं भाई सब लोग. See you soon.